मैडम 5 मिनट में शुरू करते हैं। थोड़ा बाकी Yes, सब sir. ज्वाइन हो रहे हैं तो वेट करते हैं। Yes, sir, no problem. ओके। गुड आफ्टरनून मैम। Good afternoon. अभी मुंबई की क्या सिचुएशन, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या ऑफिस वगैरह चल रहा वर्क फ्रॉम होम है पूरी Okay. तरह से। है? और क्लासेस क्लासेस वर्क सब ऑनलाइन चल रहा है, स्कूल सब कॉलेज ऑनलाइन चल रहा सब कुछ ऑनलाइन। है? ओके। आपके आप यहाँ पे अभी ले रहे ऑफिस? हो मैडम? हाँ सर। आप अभी ले रहे हो क्लासेस? नहीं, मेरा बैच खत्म हो गया जो मैं एग्जाम का था वो। हाँ। ओके ओके। मैडम यहाँ पे भी ऑफिसेस वर्क फ्रॉम होम ज्यादा चल रहा है, लेकिन ऑफिसेस थोड़े थोड़े शुरू हैं, यानी फुल अच्छा, क्लोज नहीं है। यहाँ पर भी कुछ कुछ ऐसे बहुत छोटे स्टाफ वाले छोटे फर्म्स है जिनका लिमिटेड स्टाफ है, वो लोग बुला रहे हैं। मतलब जो ओके। लोकली है, ज्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता है काम के हिसाब से, बट 90% बिल्कुल सब घर से हो रहा है अभी। Good afternoon, ma'am. C. Rachin Mundra here, branch secretary. गुड आफ्टरनून सर। अविनाश सर, स्टार्ट करें? कैसे करें? सर 4 से 5 मिनट पे शुरू करते हैं। ओके। 2 मिनट और रुक जाते हैं। यस। स्क्रीन शेयरिंग ऑन है क्या मैम? हाँ, स्क्रीन शेयर आप लोगों को विजिबल है? हाँ, इट इज हाँ यस विजिबल है। विजिबल। बाद में स्टार्ट करेंगे क्या? मतलब व्हेन वी स्पीक तो फिर उस टाइम नो पे आप बाद प्रॉब्लम। में उसको ऑन कर लीजिए। यस। ओके।
सर स्टार्ट करते हैं सर. Okay. So welcome everyone. How are you all? So welcome to another important and a very interesting session of the lockdown knowledge series by jointly conducted by the branch and Nandurbar CP chapter. So आज का टॉपिक है हमारा recent amendments in TDS and TCS. TDS and TCS is an area which is like we handle on a daily basis in our practice और उसमें भी काफी सारे changes आ गए हैं. So we have with us speaker coming from all the way from Mumbai, C. Prachi Parikh ma'am. So ma'am, welcome to the event. Thank you for your time. I would now like to request C. Avinash Gundia sir to please introduce the speaker for today. Good afternoon all and good afternoon ma'am, and thank you very much for accepting हमारा ऑफर किया और आप आए लेक्चर के लिए और हमारा एक क्वेश्चन हुआ था एंड यू डायरेक्टली सेड यस टू अस. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. And we are conducting a lockdown knowledge series at Dhule, and this is a fifth session of that lockdown series. रचना सर, मैं आपको होस्ट बन रहा हूँ. हाँ बना दीजिए सर. Yes, I'll just. हाँ यस, ताकि सब मिल सके. So we are conducting a lockdown knowledge series at Dhule branch. This is the fifth session we are conducting here. All the 5 sessions are technical sessions and some of the knowledgeable sessions also. This is a TDS. और एक बात बता दूं कि this is a requirement from the members only that one session should be on a TDS. That's why we have conducted this session. Other than that, if the members are required for some other subjects also that they required the knowledge session in this lockdown series, please contact us, message us. We will conduct a seminar on that topic also. Welcome madam. Madam के अगर introduction की बात करूँ तो madam is a qualified chartered accountant and she cleared her chartered accountancy exam in the first attempt. She is also a law graduate. She is a specialized in direct tax advisory and consultancy. She is practicing this consultancy since last 8 years. But also engaged in the teaching tax out at a CA final and internal at a reputed coaching classes in Mumbai, and also at a WRC for the last 12 years. Madam is actively engaged in income tax research, drafting, submission, especially in relation to faceless appellate matters. Madam is also a regular speaker at various study circles and contributor to articles in the Journal of Chamber Tax Consultants, Bombay Chartered Accountants Journal, and Taxman. She is avid reader and also she is a freelance artist also. She is an artist using watercolor and acrylic in that session. So welcome in the Dhule branch session. Over to you, madam. Thank you. Thank you, sir. At the outset, I thank the Dhule branch and the Nandurbar chapter of WIRC for inviting me over in this great initiative of knowledge sharing. And I'm sure that these are some small advantages of the lockdown situation, because had this not been there, it wouldn't have really been possible to interact with members across India, I would say. So for the last few months, I've been fortunate enough to meet people from various regions, and it is truly enriching. So thank you, sir, for giving me this opportunity. I would just start sharing my screen and then take you through the flow for today's session. So, yeah. So like sir said, and as the members rightly requested, there have been a lot of changes in the TDS and TCS related provisions. So Finance Act 2020 as well as 21 has brought in some really, I would say, path-breaking changes to the entire TDS and TCS regime.
So in today's session, I would be taking you through the changes, and we would be looking at what are the implications of these changes per se. And towards the end, I would also be glad to receive your questions and all, if any, so we can have a Q&A like session maybe for the last 15 or 20 minutes, as the case may be. During the course of our presentation, if any of the members have any questions which come to their mind as I am discussing the provisions, I would request them to put them in the chat box so that I can refer to them in between when we take a small breather or just after completing certain portions. So it would be, I would then try and answer a few questions at that point in time as well. Okay. So thank you everyone once again, and I think let us begin with our session for the day today. So yes, this is a brief coverage of what all changes I'm going to cover in today's session, right? तो यहाँ एक just मैंने overview दिया हुआ है. So हम section 194M and N को थोड़ा briefly cover करेंगे, जो as such September 2019 से आया था. जुलाई 2019 वाले Finance Act के द्वारा इसे insert किया गया था. मैडम सॉरी, Yes. बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा वॉइस नहीं आ रहा है आपके यहाँ से. अच्छा, डिस्टर्बेंस है कि ब्रेक हो रहा है? नहीं, डिस्टर्बेंस है. अच्छा, अभी सही है? हाँ मैडम, अभी क्लियर है. हाँ, आई थिंक मेरे एयर कंडीशनर का पीछे आवाज था. अगर वॉइस लैग होता है ना तो आप जस्ट मुझे बता दीजिए, तो मैं वीडियो ऑफ कर दूंगी. कभी कभी वो कनेक्टिविटी इश्यूज हो जाते हैं इसलिए. यस मैम, बीच में हुआ तो मैं बता दूंगा वैसे. Okay, sir, thank you. Then third section which we'll be looking up is 194O, which is with regards to TDS payments in respect of payments made to e-commerce participants. तो जैसे ये सारा online अपना shopping and ऑनलाइन मार्केट्स का आजकल दौर है, तो 194O is with regards to the payments on TDS which are made by e-commerce operators to e-commerce participants. Then we have section 194 which has come back again, क्योंकि जैसे हमें पता है फाइनेंस एक्ट 2020 की वजह से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स निकल गया है, और उसकी वजह से वापस टीडीएस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड्स जो अपना सेक्शन था 194 जो एक्टिव हो गया वापस. सो वील जस्ट बी having a look at that, and then some small amendments related to TDS which have taken effect from 1st April 2020. 206C1H जो है TCS on sale of goods, उसे हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे. जो TCS in respect of foreign tours and remittances under LRS है, जो 206C1G था, वो हम कंटिजेंसी में रखेंगे, क्योंकि अगर टाइम परमिट करता है तो आई टेक यू थ्रू दिस, बिकॉज इस फाइनेंस एक्ट में हमें 194 क्यू कवर करना है जो फाइनेंस एक्ट 21 से इंट्रोड्यूस हुआ है, एंड 206 AB विच इज हायर TDS फॉर नॉन फाइलर्स, जो दोनों सेक्शन जो जुलाई से एक्टिव हुए हैं. तो ये हमारा sorry. So this is going to be the coverage for today's session. So let's start with section 194M. So जैसे हम जानते हैं जो आगे के TDS के sections हैं, जैसे 194C, 194H, 194J, हर एक section में individual and HUF is under a responsibility to deduct tax provided his turnover in the preceding financial year has crossed the limits of 44 AB. माने preceding financial year में अगर उसका turnover 1 CR या उसके gross receipts 50 lakhs को क्रॉस कर जाते हैं, तो उसे करंट ईयर में TDS डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अंडर 194C, H, I, J होंगे जो मे बी TDS के थ्रेशोल्ड्स नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी काफी लार्ज पेमेंट्स कर रहे हैं, विच आर इन द नेचर विच इज कवर्ड अंडर 194C, H, I, J एक्सेट्रा.
So to plug that lacuna, section 194M has been introduced. So as such ये section September 2019 से effective हुआ है और ये section उन individuals and HUFs को cover करता है जो otherwise 194C, H, J etc. में cover नहीं हो पाते हैं because of the turnover threshold which is specified. So 194M के अंदर कौन कौन से payments covered हैं? तो यहाँ पर you have any payments which are made for carrying out any work, supply of labor or for carrying out any work under pursuance of a contract, या फिर by way of commission अगर कुछ payments किया गया है, by way of professional services कुछ payments किया है. So if these are the nature of payments which have been done by an individual or HUF during the financial year, there is a liability to deduct tax at source at 5% on the total sum which is paid if the aggregate sum pays exceeds 50 lakh rupees. So जैसे किसी individual ने अगर किसी contractor को during the year समझ लीजिए 60 लाख rupees pay किया है और वो 194C में covered नहीं है because of the turnover threshold which is there, or maybe he's made the payment for his personal purposes. In those circumstances, this individual is under an obligation to deduct TDS under section 194N. TDS क्या अमाउंट पे करना है? तो टोटल अमाउंट पे करना है, लेकिन ट्रिगर कभी है TDS करने के लिए? तो the trigger for deducting tax at source is when your payment crosses 50 lakhs. So the moment your payment crosses 50 lakhs on the entire amount, you are required to make a TDS at 5% of the total sum. So ये कुछ brief provisions थे section के बारे में. अभी कुछ special points about the section. I'm sure हम सब ने 194M पढ़ा होगा, लेकिन ये कुछ खास बातें हैं जो ऐसे as such generally ध्यान में नहीं आती हैं, but I've just tried to put them up over here. So सबसे पहले under section 194M, the payee has been specified. माने आप जिस person को pay कर रहे हैं, उसका resident होना compulsory है because the section is applicable only in respect of resident payees. लेकिन जब हम payer की बात करते हैं, माने the individual or HUF who's making the payment, payer के लिए कोई residential यहाँ पर ऐसा भी है कि नॉन रेसिडेंट पेयर्स भी यहाँ पर कवर्ड है because the section is not specifically excluding them. So इसका एक मैं छोटा सा illustration देना चाहूंगी. मैडम सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ बीच में, वॉइस ब्रेक हो रही है. उसने इंडिया पर टीम बनवा रहा है. हेलो, यस सर. हाँ मैम, वॉइस ब्रेक हो रही है. अच्छा, तो मैं मेरा वीडियो पुट ऑफ कर देती हूँ तो थोड़ा कनेक्टिविटी स्ट्रांग हो जाएगा. यस यस यस. ओके, सो लेट अस से मिस्टर एक्स है जो नॉन रेसिडेंट है एंड उसने ड्यूरिंग द ईयर इंडिया में सपोज अपना उसका घर बनवा रहा है वो, तो उसने एक कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट कर रखा है और वो पूरा रिनोवेशन और कंस्ट्रक्शन का खर्चा जो है वो 50 लाख को क्रॉस कर रहा है. अभी एज सच ये पेमेंट उसके बिजनेस पर्पस के लिए नहीं है तो 194C वगैरह में वो कवर्ड नहीं होगा, और क्योंकि उसका एग्रीगेट पेमेंट 50 लाख को क्रॉस कर रहा है 194M के अंदर वो कवर हो जाएगा. पर अपने यहाँ पर वी कैन गेट अ डाउट कि बिकॉज द पेयर इज अ नॉन रेसिडेंट, क्या वो ये सेक्शन के अंदर कवर होगा? तो 194M का अगर हम बेयर प्रोविजंस देखते हैं तो पेयर के कॉन्टेक्स्ट में कुछ भी ऐसा नहीं बोला गया है दैट उसको रेसिडेंट होना है, कंपलसरी है या नॉन रेसिडेंट कवर्ड नहीं है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, जिसकी वजह से नॉन रेसिडेंट पेयर भी सेक्शन 194M के अंदर कवर हो जाएगा. सो ये एक स्पेशल एस्पेक्ट यहाँ पर था. एंड दूसरा ऐसा है कि यूजुअली जो सारे पेमेंट्स आप करते हैं 194C हो या J हो, वो आप बिजनेस पर्पस के लिए करते हैं एंड फिर उसके लिए TDS यू हैव टू डिडक्ट TDS बिकॉज ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ दोज सेक्शंस. लेकिन सेक्शन 194M में एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो असेसी है इंडिविजुअल या HUF, उसका मेजर चंक ऑफ इनकम जो है वो लेट अस से एग्जेम्प्ट इनकम से आता हो, माने एग्रीकल्चरल इनकम होगा या फिर और कोई और किसी तरह का एग्जेम्प्ट इनकम होगा. एंड अगर
उसने उन पेमेंट्स में से भी ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर का चार्ज या प्रोफेशनल फी वगैरह पे किया है, फिर भी उसे टीडीएस करना होगा, क्योंकि सेक्शन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि द पेमेंट हैज टू बी मेड आउट ऑफ इनकम विच इज चार्जेबल टू टैक्स और समथिंग टू दैट इफेक्ट। तो ये दो जो डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर थे, ये थोड़े स्पेशल पॉइंट्स थे विच आई थॉट आई शुड ब्रिंग टू द अटेंशन ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स। So this was with regards to 194M. अभी नेक्स्ट सेक्शन हम कवर करते हैं। ये सेक्शन सितंबर 2019 से इफेक्टिव हुआ है। अभी नेक्स्ट सेक्शन जो है वो सेक्शन 194N, right? Now this section was also introduced by Finance Act 2019. That is the one which came in July, and वापस से Finance Act 2020 ने इसको थोड़ा सा अमेंड किया था। अभी इसमें अमेंडमेंट ये आई थी कि जो नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम है उनके लिए टीडीएस के रेट्स इन्होंने थोड़े से अलग कर दिए। माने अगर एक रिसिपिएंट है, जैसे 194N इटसेल्फ वाज अ वेरी डिफरेंट टीडीएस सेक्शन। थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँ तो यूजुअली वी हैव फिगर्ड आउट दैट टीडीएस इज समथिंग विच इज विद रिगार्ड्स टू एक्सपेंसेस। माने अपने एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हम टीडीएस हमेशा एनविसाज करते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा है कि हम अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉल अगर करते हैं एंड वो अगर 1 करोड़ के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाता है तो द बैंक इज सपोज टू डिडक्ट टीडीएस। सो इस तरह से ये थोड़ा सा पाथ ब्रेकिंग प्रोविजन आया था टीडीएस के कॉन्टेक्स्ट में। और फाइनेंस एक्ट 2020 में इन्होंने एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया। प्रोवाइजो था टिपिकली उन लोगों को उन लोगों के लिए जो अपना रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं करते हैं, एंड उनके लिए उन्होंने कुछ थ्रेशोल्ड सेट कर दिए। सो फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज अ विड्रॉअर हु इज नॉट फाइल्ड हिज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर पास्ट 3 years, right, and the amount which is withdrawn from the account is more than 20 lakhs but it is less than 1 crore, so TDS is required to be made at the rate of 2%. अगर आपका विड्रॉल है इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ और अगर आप ये नॉन फाइलर्स के डेफिनेशन में आ जाते हो तो आपका जो रेट ऑफ टीडीएस था है वो अब हो जाएगा 5%। बाकी चीजें यहाँ पर नॉर्मल है, माने टीडीएस हैज टू बी मेड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अमाउंट्स व्हिच इज क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड। उसके अलावा मतलब 1 करोड़ के अंदर वाले जो अमाउंट्स है उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड नॉन फाइलर के अलावा जो बाकी के लोग हैं उनके लिए जो यूजुअल 2% रेट उन्होंने स्पेसिफाई किया था that remains, correct? So this is only in respect of non filers the proviso came in. अभी ये प्रोवाइजो आने के साथ साथ थोड़ी सी दिक्कतें भी आ गई। कैसे, ये हम इस इलस्ट्रेशन के साथ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Now, as a bank who is the person responsible for deducting TDS, they have to ensure that the withdrawer has furnished his return for all the 3 previous years in question. माने ये थ्रेशोल्ड जो इन्होंने दिए नॉन फाइलर्स के लिए, क्या आपको ये थ्रेशोल्ड के हिसाब से टैक्स डिडक्ट करना है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया है या नहीं। एंड ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चेक करने की कि वेदर द विड्रॉअर हैज सबमिटेड हिज रिटर्न ऑफ इनकम और नो फॉर द लास्ट 3 years, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किस पर फिक्स हो गई? बैंक पर, क्योंकि बैंक इज द पेयर हियर एंड इज ऑल्सो द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। तो ये प्रैक्टिकली कैसे फंक्शन होगा ये हम इस इलस्ट्रेशन के हेल्प से देखते हैं। So Mr. A has made the following withdrawals during the financial year 2021. He has not furnished his return of income for the previous years 17-18, 18-19 and 19-20, and the due dates for filing of return have already expired. 139(1) के due dates हमें यहाँ पर देखने हैं और ये उसके अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स हैं। सो 1 अगस्त 21 को उसने 10 लाख विड्रॉ किए हैं, 15 सितंबर को उसने दूसरे 35 लाख विड्रॉ किए हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो 16 मार्च 22 को उसने 30 लाख विड्रॉ किया है। सो ये आपको 5 डिटेल्स दिए गए हैं उसके अमाउंट ऑफ विड्रॉल्स के।
अभी अगर हम सेक्शन 194N का एप्लीकेशन देखें तो 1 अगस्त 2021 को 10 लाख उसने विड्रॉ किया है, तो वो थ्रेशोल्ड से नीचे है, सो कोई भी टैक्स यहाँ पर डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर सितंबर में जब वो 35 लाख और विड्रॉ करता है तो उसका एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉन 45 लाख होता है, जो 20 लाख के थ्रेशोल्ड से ऊपर है। सो 45 लाख माइनस 20 लाख के डिफरेंशियल कंपोनेंट पे 2% से टीडीएस होगा, विच विल बी 50,000 रुपीज। 17 नवंबर को वो और 25 लाख विड्रॉ कर लेता है, जिससे उसका एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉन 70 हो जाता है एंड इंक्रीमेंटल 25 लाख पे 2% से 50,000 और उसका टीडीएस डिडक्ट करना होगा जब ये विड्रॉल होगा। फिर जनवरी 22 में 45 लाख वो और विड्रॉ करता है, जिससे उसका एग्रीगेट अमाउंट विड्रॉन हो जाता है 1,15,00,000। तो यहाँ पर दोनों भी स्लैब दोनों भी रेट उसको एप्लीकेबल होंगे जब तक कि 1 करोड़ वो रीच नहीं करता है। माने 30 लाख पे 2% से टीडीएस होगा एंड 1 करोड़ के ऊपर के 15 लाख पे 5% से टीडीएस होगा, तो उसका एग्रीगेट टैक्स जो डिडक्ट होना है वो 1,35,000 होगा। उसके बाद जो आखिरी 30 लाख वो डिडक्ट कर विड्रॉ कर रहा है, उस पर 5% से टीडीएस होगा, विच विल बी 1,50,000। तो ये एक बहुत ही मैंने सिंपल तरीके से ये 2% और 5% यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश की है। दिस इज हाउ द थ्रेशोल्ड विल बी वर्किंग इन केस ऑफ person who has not filed his return of income and is withdrawing money from his bank account, which is at this stage it goes beyond 20 lakhs and at this stage it goes beyond 1 crore. Now, what is the practical issue which comes in this section? So, सबसे पहले यहाँ पर ओनर के द ओनस इज ऑन द डिडक्टर, तो बैंक के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक अकाउंट होल्डर की रिटर्न फाइलिंग स्टेटस कंफर्म करे। अभी इस चीज के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक यूटिलिटी प्रोवाइड की थी, जिसका मैंने यहाँ पर लिंक रिप्रोड्यूस किया हुआ है। दो टू बी ऑनेस्ट मैंने प्रैक्टिकली कभी ये लिंक पर जाकर किसी पर्सन के लिए रिटर्न फाइलिंग स्टेटस चेक नहीं किया है, बट दिस इज अ यूटिलिटी विच इज बीन प्रोवाइडेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, विच इज अवेलेबल टू ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स। सारे बैंक्स इस यूटिलिटी को यूज करके पैन के बेसिस पे एसएससी का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस चेक कर सकते हैं। करेक्ट, ये एक चीज है। अभी प्रैक्टिकली कई बार ऐसे मैंने सुना है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सो मेनी interactions I have had that banks are not really following this, or they are deducting TDS at the highest possible rate to avoid being categorized as assessee in default, but practically अगर हम देखें तो ये एक डिपार्टमेंट की तरफ से एक एफर्ट रहा है to ensure that the return filing status can be ascertained. So this is one thing. हालांकि दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी बिग कंप्लायंस बर्डन ऑन द बैंक्स ऑल्सो, क्योंकि पिछले 3 साल ये बहुत फ्लूइड कॉन्सेप्ट है। अगर हम रिटर्न फाइलिंग डेट के बाद विड्रॉल करते हैं, जैसे मेरे एग्जाम्पल में सपोज अगर हम जनवरी में विड्रॉ कर रहे थे, राइट, तो पास्ट 3 इयर्स का डेफिनेशन चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि फाइनेंस क्योंकि अपना असेसमेंट ईयर 21-22 का भी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तभी एक्सपायर हो जाएगा। तो 17-18, 18-19, 19-20 जैसे मैंने लिखा था एग्जाम्पल में, उसके बदले अभी 18-19, 19-20 एंड 20-21 चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स के लिए ये प्रोवाइजो चेक करना है। तो कंप्लायंस बर्डन बढ़ जाएगा फॉर वन, एंड सेकेंडली इट विल बी एन एडेड टास्क फॉर द पेयर्स एंड ऑल्सो टू द पेईज, क्योंकि कुछ भी अगर इधर बैंक ने चेक नहीं किया या कुछ में भी कुछ गड़बड़ हो गया तो उनका टीडीएस जो है वो हायर रेट पे डिडक्ट होने का चांस है। ऑल्सो ये प्रोवाइजो बात करता है ऑफ चेकिंग द रिटर्न फाइलिंग स्टेटस फॉर द पास्ट 3 years। अभी अगर assessee has been incorporated in the current year, माने उसका फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन है समझो, तो फिर ये प्रोवाइजो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे? जैसे फर्स्ट टाइम किसी पार्टनरशिप फर्म अभी अप्रैल 20 में इनकॉर्पोरेट हुआ है, सो दे कांट रियली हैव अ पास्ट 3 years रिटर्न फाइलिंग स्टेटस बिकॉज दे हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द करंट प्रीवियस ईयर। सो इन दिस सर्कमस्टांस ऑल्सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट कि ये प्रोवाइजो हम अप्लाई कैसे करें। तो
ऐसे केसेस में इनको कुछ अलग लिखना चाहिए था प्रोवाइजो के अंदर कि अगर न्यूली फॉर्म्ड एंटिटीज हैं तो हम खाली करंट ईयर का रिटर्न फाइलिंग स्टेटस देखेंगे या फिर उनको ये अप्लाई नहीं होता है, समथिंग टू दैट इफेक्ट। इन एब्सेंस ऑफ दिस क्लैरिफिकेशन क्या हो सकता है कि बैंक्स यही बोलेंगे कि आपने पास्ट 3 इयर्स के रिटर्न फाइल नहीं किए तो हम आपको ये प्रोवाइजो एप्लीकेबल कर देंगे। दे विल नॉट बी अप्रेजिंग द फैक्ट कि हम बने ही इस साल में है, द फर्म हैज और द एंटिटी हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस इन द करंट ईयर, तो इसकी वजह से लिटिगेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। So this was a small amendment which had come in 194N by virtue of Finance Act 2020, which was the proviso which was inserted. Now we go ahead to section 194O. What if ITR is filed after due date? So the proviso talks of due date of filing return as per 139(1). तो बेसिकली अगर आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल किया है तो भी आप टिपिकली हम प्रोवाइजो को इंटरप्रेट करेंगे तो यू वुड नॉट हैव कंप्लाइड द कंडीशन बिकॉज योर रिटर्न फाइल्ड इज नॉट एज पर 139(1). Okay. Let us go to the next section, which is 194O, which is in respect of TDS in respect of e-commerce participants. So यहाँ पर एक brief example अगर मैं आपको दूँ तो जैसे Amazon है, ये एक e-commerce operator है और जो सारे vendors Amazon पे list होते हैं उनको हम बोलते हैं e-commerce participants. करेक्ट। सो ये ई कॉमर्स ऑपरेटर की वजह से ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट्स जो है वो अपना बिजनेस फैसिलिटेट करते हैं। सो बिकॉज हम कोई चीज़ें सर्च करते हैं तो अमेजोन उस वेंडर के प्रोडक्ट्स थ्रो आउट करता है और जिनको उन प्रोडक्ट्स ऑर्डर करना है वो वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। सो दिस इज हाउ द ई कॉमर्स सेगमेंट वर्क्स, राइट। ये सारी चीज़ें एक डिजिटल या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से होती हैं। सो usually what happens is there is some payment which is made by the e-commerce operator to the e-commerce participant. There is also some payment which is made by the e-commerce participant to the e-commerce operator. So payments जो हैं वो दोनों दो टू वे होते हैं। ऑपरेटर भी पार्टिसिपेंट को पे करता है, पार्टिसिपेंट भी ऑपरेटर को पे करता है। बट यहाँ पर जो TDS करना है दैट हैज टू बी डन एट द रेट ऑफ 1% ऑन द ग्रॉस अमाउंट ऑफ सेल्स सर्विस और बोथ ऑफ सच अमाउंट्स which are paid by the operator to the participant. सो वो सारे सेल उस पार्टिसिपेंट के जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू इफेक्ट होते हैं उनके रिस्पेक्ट में 1% TDS करके आपको ये पार्टिसिपेंट के पेमेंट में से डिडक्ट करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ गुड्स ऑनलाइन खरीदते हैं तो हम डायरेक्टली ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को पे करते हैं। जैसे इंडिया में अक्सर दिस इज द पॉपुलर वे। फॉर एग्जांपल सपोज हम जोमेटो में से या स्विगी में से कोई रेस्टोरेंट में से कुछ खाना ऑर्डर करते हैं तो वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट हमारे रेसिडेंस पे डिलीवरी देने आता है। So we pay the cash on delivery to the person who has come from that restaurant. So this is a case wherein the purchaser is paying directly to the e-commerce participant. कभी कभी ऐसे होता है कि अगर हम अमेजोन वगैरह से कुछ मंगाते हैं, अगर हमने कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है तो मे बी वो डिलीवरी जो है वो अमेजोन के थ्रू होती है तो हम जो अमाउंट पे करते हैं वो डायरेक्टली ई कॉमर्स ऑपरेटर को जाता है। सो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन द पॉइंट हियर इज अगर आपने वो पेमेंट डायरेक्टली ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट को भी किया है तो भी फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन ऐसा ही माना जाएगा कि आपने वो पेमेंट डायरेक्टली ई कॉमर्स ऑपरेटर को कर दिया और फिर वो पेमेंट ऑपरेटर पार्टिसिपेंट को कर रहा है जिसकी वजह से उसको 1% TDS करना है। यहाँ पे एक रेडीमेड गारमेंट सेलर है जिसने अपने आप को मिंत्रा पे रजिस्टर किया हुआ है। सो मिंत्रा की वजह से उसके 2 महीने का सेल जो है वो सपोज 25,000 रुपीज का सेल उसका होता है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज मिंत्रा व्हेन इट मेक्स पेमेंट्स टू दिस पर्टिकुलर
shop owner who's a local guy, the vendor, they are going to make TDS at the rate of 1% on the gross amount of sale and then pay out the balance to the owner. This is how it is going to operate. अब ऐसा भी हो सकता है कि वो वेंडर ने अपने आप को मिंत्रा पे रजिस्टर करने के लिए कुछ पेमेंट किया होगा, एडवर्टाइजिंग के लिए कुछ पेमेंट किया होगा, तो वो सारे पेमेंट्स को 194O में मुझे इंक्लूड नहीं करना है, टीडीएस खाली मुझे ग्रॉस अमाउंट पे करना है, राइट. एक इलस्ट्रेशन आगे है which will help us look at this these provisions in greater clarity. So let's go ahead. What are the exceptions where TDS is not required to be made? So if the e-commerce participant is an individual or HUF, the gross amount of sale or service or both does not exceed 5 lakhs. The PAN and Aadhaar has been furnished to the e-commerce operator. ये 3 कंडीशंस अगर फुलफिल हो जाते हैं तो फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर को टीडीएस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. सो जैसे अगर इंडिविजुअल एचयूएफ है, बहुत ही नॉमिनल सा उसका सेल हो रहा है जो 5 लाख के नीचे इन्होंने डिसाइड किया हुआ है, एंड अगर ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने अपना पैन एंड आधार नंबर ई कॉमर्स ऑपरेटर को दिया हुआ है, तो इन सर्कमस्टेंसेज में देयर इज नो नीड टू मेक टीडीएस अंडर 194O बाय द ई कॉमर्स ऑपरेटर. ऑल्सो अगर ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंडर कोई ट्रांजैक्शन कवर हो रहा है तो वो सेम ट्रांजैक्शन के लिए दूसरे कोई सेक्शन के अंडर टीडीएस करने की जरूरत नहीं है. सो देयर विल बी सम ओवरलैपिंग के 194O जहां पर कवर हो रहा है वैसे 194H आ सकता है, जैसे हम कमीशन की बात करते हैं. तो अगर कुछ उस तरह का ओवरलैपिंग पॉसिबल है तो टीडीएस जो है वो 194O में किया जाएगा और कोई टीडीएस का प्रोविजन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा. ऑल्सो अगर कुछ पेमेंट्स किए गए हैं विच आर फॉर होस्टिंग एनी एडवर्टाइजमेंट्स or providing any services which are not in connection with the sale and services of the products particularly, फिर भी section 194O का applicability नहीं है, right? अब यहाँ पर ये meaning of certain terms हैं, लेकिन मैं सारे टर्म मीनिंग यहाँ पर नहीं पढ़ूंगी, पर मैं आपका ध्यान एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे लाना चाहती हूँ, विच इज द मीनिंग ऑफ द टर्म ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड मीनिंग ऑफ द टर्म ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट. So e-commerce participant is a person who owns, operates or manages digital or electronic facility or a platform for electronic commerce. राइट अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पर भी रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द ई कॉमर्स ऑपरेटर के बारे में कुछ बोला नहीं गया है, उन्होंने खाली बोला है इट्स अ पर्सन हु ओन्स, ऑपरेट्स और मैनेजेस डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी और प्लेटफॉर्म फॉर e-commerce, right? लेकिन if you look at the definition of e-commerce participant, तो e-commerce participant is a person who is resident in India. So in the definition of e-commerce participant, they have specifically covered only resident e-commerce participants. So if the person who is wanting to get himself listed on an e-commerce operator like Amazon, Flipkart, Myntra, Zomato, Airbnb, etc., is a non-resident vendor, then he is not covered under the meaning of e-commerce participant. It's just restricted to resident, who's a person resident in India selling his goods or providing services through digital media. Correct. So this is what I wanted to draw your attention to. Just like 194M, payer का residential status में दोनों आ सकते हैं, resident as well as non-resident. लेकिन जो recipient है माने यहाँ पर जो participant है उसके context में only residents have been covered. Now let us have a look at an illustration. यहाँ पर एक typo है, ये 18 होना चाहिए. I'll just alter it once we discuss. So that is, I will come to this slide later. First, let's have a look at the example. Now let us say Amazon India is a resident e-commerce operator facilitating the sale of Indian vendors, right? The transactions done during the previous year are as follows. So you have
particulars and amount given in lakhs. Let us say the MRP which is there of particular products which are sold comes to say 2000 lakhs. There is a 10% discount which is offered by the e-commerce participant. सो जो वेंडर है जिसने अपने ये प्रोडक्ट्स अमेजोन पे रखे हुए हैं सेल के लिए, ही इज ऑफरिंग अ 10% डिस्काउंट विच कम्स टू 200 lakhs. There is a 10% discount which is offered by the e-commerce operator as well. माने Amazon का जैसे वो सेल होता है, फेस्टिवल सेल, ग्रेट इंडियन सेल डेज, whatever, तो उस तरह से 10% डिस्काउंट जो है वो e-commerce ऑपरेटर ने भी दे रखा है, which is again at 200 lakhs. And there is a 10% commission which is charged by the e-commerce operator, which is at 10%, which comes to 180 of 2000 minus 200, right? अभी इस केस में the gross amount of sale, right, from the context of the e-commerce participant is 1800 lakhs, right? क्योंकि 2000 का उसका MRP है and 10% डिस्काउंट जो है वो ई-कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने ही दिया हुआ है. सो जो अमाउंट ऑफ सेल है वो हो जाता है 1800 lakhs, correct, which is the MRP as reduced by discount offered by the e-commerce participant. सो Amazon India जो अपना ई-कॉमर्स ऑपरेटर है उसे 1% TDS करना पड़ेगा ऑन 1800 lakhs which will come to 18 lakhs. सो जस्ट देयर इज अ टाइपो हियर, एक जीरो मिसिंग है तो प्लीज उसको इग्नोर कीजिए. हमको 1800 lakhs पे 1% TDS करना होगा. 1800 कहाँ से आया, तो 2000 lakhs की जो MRP है जो प्रोडक्ट सेल हुए हैं उसमें से ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने दिया हुआ डिस्काउंट हम रिड्यूस करेंगे. ये दो अमाउंट्स हम रिड्यूस नहीं करेंगे क्योंकि ये अमाउंट्स जो है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ने दिए हुए हैं. ये डिस्काउंट्स या ये कमीशन उसने लिया है या दिया है. सो दीज वोंट फैक्टर इनटू द amount on which we are required to do TDS. So this is how this section looks to work. Now why I say looks to work, because देखिए एक्चुअली जो ई कॉमर्स ऑपरेटर और ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. तो एज अ थंब रूल ये सबको वैलिड नहीं हो सकता है. So to actually understand how 194.0 is going to work between an e-commerce participant and an operator, we'll have to look at the contract, we'll have to look at the nature of payments which are being made. But this is the principle of the section कि यहाँ पर खाली जो सेल इफेक्ट हुआ है उसके ऊपर 1% TDS किया जाएगा. फिर वो सेल अमाउंट डायरेक्टली ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट ने रिसीव की हो या फिर ई कॉमर्स ऑपरेटर ने, माना यही जाएगा कि ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको पे आउट कर रहा है. सो दिस इज एन इलस्ट्रेशन. नाउ लेट मी गो बैक टू द अर्लियर स्लाइड. अभी डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हम लोगों के लिए इट मीन्स वन एंड द सेम. You don't really need to go and find out from an IT perspective कि दोनों में अलग क्या है. They are just online platforms which enable us to network with other people who are interested in buying or selling the product. So it is a platform which facilitates delivery and you can actually look at buying and selling things online. So उसके examples बहुत सारे हैं आजकल, उन्हीं का दौर चल रहा है. Amazon, Airbnb, Zomato, Swiggy, etc. are all examples of e-commerce operators. Now I would just bring your attention to one important part here. ऐसे पता नहीं ये सेक्शन कितने हम लोगों में से कितने लोगों के लिए रेलेवेंट है, बट एकेडमिक के लिए इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. So now एक खास बात अगर आपने नोट की होगी तो this section has not specified any thresholds for deduction of TDS. So if you look at all the other sections उसमें एक लिमिट होता है कि 30,000 के ऊपर अमाउंट गया तो 50 lakhs के ऊपर अमाउंट गया तो ये सेक्शन में इस तरह से कुछ स्पेसिफाइड नहीं है. It just says that any amount which is being paid unless you are covered in that exception, it is liable for a TDS deduction, which is a very special part of this section. Also, the CBDT has given out some guidelines to ensure that this section is effectively made applicable. तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट गाइडलाइन मैं यहाँ पर आपका ध्यान लाना चाहूंगी, which is देखो when we are in the process of making an online sale, कई बार ऐसे होता है that we are directed to a
payment gateway, right? So there is a vendor and then you're going to finally get that product, but that payment has to be made through a payment gateway, correct? Just a Razor Pay or whatever other platforms are there. So now the CPDT has clarified that the payment gateway is not required to deduct TDS on a transaction if it has already been deducted by the e-commerce operator. So obviously, because the person who's selling the product is the e-commerce operator, the payment gateway is just facilitating the receipt of payment, and that is why it will not be required to deduct TDS if it has been deducted by the e-commerce operator. So this is when the e-commerce operator is making payment to the e-commerce participant for all the sales which have been effected. एंड दूसरा प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट चीज है, आजकल हम लोग ऑनलाइन इंश्योरेंस भी बाय कर सकते हैं. You have so many websites wherein you can log on and compare products and buy an insurance policy online. So here, if the insurance agent or aggregator has no involvement in the transaction between the insurance company and the buyer of insurance policy, the agent is not under an obligation to deduct tax. जब हम प्रैक्टिकली फिजिकली इंश्योरेंस खरीदते हैं तो देयर इज अ एजेंट इन बिटवीन एंड वी मेक ऑल द पेमेंट्स टू द एजेंट, बट व्हेन वी बाय द इंश्योरेंस प्रोडक्ट ऑनलाइन वी आर डायरेक्टली मेकिंग द पेमेंट ऑनलाइन, सो द एग्रीगेटर्स और इंश्योरेंस एजेंट्स in this case are not responsible for deducting tax at source. So these were just interesting points I thought I should bring to your notice. I'll just proceed ahead now. There is this small difference between 194O and equalization levy, which I would like to bring to your notice. Okay. So equalization levy is something which is basically a different code in itself. It's a different kind of tax, but there is a lot of overlapping which happens between 194O and equalization levy, and therefore there were, after 194O was introduced, there were a lot of representations made by e-commerce operators that we are required to pay both. So how do we actually deal with the situation? So Finance Act 21 has given out some relaxation from the scope of equalization levy. Here what I have tried to do is, from an academic perspective, I have just tried to put the differences between 194O and equalization. Hello? Anybody wants to say something? Okay. Fine. So who is liable to deduct and deposit? So under section 194O, the e-commerce operator is liable to deduct the TDS and deposit it with the central government. When it comes to equalization levy, the e-commerce operator is liable to deposit the levy. Residential status of e-commerce operator, both resident and non-residents are covered. Under equalization levy, only non-resident e-commerce operators are covered. Residential status of e-commerce participant, म्हणजे vendor. So 194O, only resident is covered. Equalization levy, non-resident and sale of goods and services should not be effectively connected with the PE in India. Right, so this is a very big difference here with regards to residential status of e-commerce participant. The customer, he can be resident or non-resident in India. Again, the customer for the purpose of equalization levy can be a resident or non-resident as specified. The rate of TDS is 1% of the gross amount for 194O. It is 2% of the consideration received or receivable by an e-commerce operator from supply of goods or services. So this is a little about 194O. Now let us go ahead with the other TDS amendments. Let me just look at the chat box if there are any questions. Okay, fine. The next amendment which I wish to cover here is for section 194O. Now, as we all know, DDT was abolished and therefore it brings again the TDS provisions back into
application. So TDS on dividend payments, that is section 194 is again operative. So TDS is required to be deducted at the rate of 10% on payment of dividend to residents exceeding 5,000 rupees and 2,500 in cases where it's paid in cash. And if at all dividend is to be paid to a non-resident, the rate of TDS is 20% on the amount of dividend. So this is a small change because of 115 being abolished. Okay, there are these two small, though interesting changes in 194C and 194J, which I would just like to bring to the notice of the participants. So 194C we all know is with respect to payment made to contractors. तो जहाँ पर contractors को हम किसी particular work के लिए payment करते हैं तो 194C comes into picture. Work की का definition ये section में दिया हुआ है. एंड अभी तक ऐसा था कि अगर मैंने समझो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टी है, अगर कॉन्ट्रैक्टी ने किसी दूसरे पर्सन से मटेरियल्स परचेज करके कॉन्ट्रैक्टर को दिया या फिर उसे कहा कि ये पर्टिकुलर मटेरियल आप ये पर्सन से लो और फिर ये वर्क परफॉर्म करो, तो वो वर्क के डेफिनेशन में नहीं आ रहा था. लेकिन अभी जो डेफिनेशन में अमेंडमेंट हुआ है उसके हिसाब से इफ देयर इज एनी मटेरियल व्हिच इज परचेज्ड फ्रॉम अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द कस्टमर, माने कॉन्ट्रैक्टर के रिलेटेड पार्टी से अगर मटेरियल परचेज किया एंड फिर कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ उस पे वर्क किया तो दैट इज आल्सो गोइंग टू कम विद इन द डेफिनेशन ऑफ वर्क एंड इट विल बी कवर्ड अंडर द TDS प्रोविजंस. सो यहाँ रिलेटेड पार्टी का जो मीनिंग है दैट हैज टू बी टेकन सेम as is for the purpose of section 40A2, right? So we have all the relatives and in case of partnership forms, etc., the partners coming into picture. So point E has been modified here, right? So it says that even if there is any person who is obtaining this material from a party related to the person under provisions of 40A2, it will come within the meaning of the term work. Next small change is again, this was from Finance Act 2020, 194J, they have made a change. Now this change is likely to cause some confusion. So ऐसे था कि कुछ technical services और कुछ पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स कभी कभी ओवरलैप होते थे. फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑल दीज एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर स्लाइटली टेक्निकल इन नेचर. सो किसी मशीनरी को रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट है या किसी बड़े से इक्विपमेंट को रिपेयर करने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें दे यूज्ड टू बी लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कि वेदर दिस इज पेमेंट फॉर टेक्निकल सर्विसेज और वेदर इट इज गोइंग टू कम अंडर द AMC कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर 194C. तो लोग अक्सर क्या करते थे टू नॉट टू फॉल इन दैट असेस्टी इन डिफॉल्ट रिस्क, दे यूज्ड टू डिडक्ट टैक्स एट द हायर रेट विच यूज्ड टू बी 10%. जहां जहां पर डिफिकल्टी थी असर्टन करने के लिए दैट वेदर इट इज अ पेमेंट फॉर फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज और वेदर इट इज अ पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर, पीपल यूज्ड टू स्ट्रेट अवे डिडक्ट टैक्स एट 10%. सो ये डिफिकल्टी को हटाने के लिए अमेंडमेंट क्या प्रपोज किया इन्होंने कि the rate of TDS in respect of FTS other than professional services will be reduced from 10% to 2%. So confusion हटाने के लिए इन्होंने कहा कि अभी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के ऊपर भी जो TDS है वो 10% के बदले 2% पे किया जाएगा, which is same as the rate which is there under 194C. साथ साथ में रॉयल्टी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के लिए भी उन्होंने 2% रेट कर दिया. बट ये पर्टिकुलर चेंज जो इन्होंने किया FTS के ऊपर का TDS रेट रिड्यूस करके, सो दिस हैज कॉज्ड लिटिल मोर डिफिकल्टीज. Now, just as there was an overlap between technical services and payments which are made to contractors, there is also an overlap between certain technical services and professional services. माने कई बार ऐसे होता है कि कोई particular payment, whether it is to be classified as payment made for professional service or payment made for technical service, it's not clear. सो पहले वो दिक्कत नहीं होती थी क्योंकि दोनों का रेट जो था वो सेम था, विच वॉज 10%.
अभी टेक्निकल सर्विसेज के टीडीएस का रेट इन्होंने 2% करके इन दोनों के बीच में जो कंफ्यूजन है उसमें दे हैव अगेन क्रिएटेड अ रिफ्ट। एंड अगर अभी ऐसा कोई डिफिकल्टी है कि एक पर्टिकुलर सर्विस प्रोफेशनल नेचर का है या एफटीएस माना जाएगा, तो पीपल विल नाउ डिडक्ट टीडीएस एट द रेट ऑफ 10% जस्ट टू ensure that they don't become assessees in default. So this is just a small point I was wanting to share. Now let us go ahead. This is section 194P, which has again come in from this year. It is in respect. अभी तक किसी को कुछ questions आहे, then you can just put it in the chat box. कुणाला काही प्रश्न असतील तर please chat box मध्ये you can put them down. I'll try to answer that. Okay. So TDS from pension and interest income of senior citizens. So यहाँ पर the payer is a specified bank and the payee is a resident senior citizen who's aged 75 years or more during the previous year. ये सेक्शन ने कोई रेट स्पेसिफाई नहीं किया है। रेट की बात होती है तो ये रेट्स इन फोर्स बोल देते हैं, विच एज आई अंडरस्टैंड उसका एक अलग डेफिनेशन है, बट दैट टेक्स अस टू द स्लैब रेट्स। माने टीडीएस यहाँ पर किस तरह से होना है वो थोड़ा जैसे समय जाएगा वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। ऑल्सो देयर हैज बीन नो थ्रेशहोल्ड विच हैज बीन स्पेसिफाइड कि कितने अमाउंट के ऊपर टीडीएस करना है, कितना अमाउंट उसमें से एक्सक्लूड करना है एक्सेट्रा। और सबसे बड़ी बात कोई टाइम भी स्पेसिफाई नहीं किया है फॉर व्हेन द टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। सो फॉर ऑल द अदर sections you have a logic that at the time of payment or at the time of credit whichever is earlier etc. यहाँ पर इस तरह का कोई time specified नहीं है। So I think there'll be something more which will be coming on this section because prima facie leaves us with too many ambiguities. So the payer here is a specified bank, the payee is a resident senior citizen, rates in force, threshold specified नहीं है, time बताया नहीं गया है। What are the conditions which necessitate the deduction of tax? So सबसे पहले जो senior citizen है उसका income should consist of pension and interest income only. So he should not have any other income, चाहे वो rental income हो, dividend income हो, कुछ और उसने during the year earn किया हो, कुछ नहीं. His income should only consist of pension and interest. Again, interest should be received only from the account which is maintained by the senior citizen in the specified bank. माने और किसी बैंक में अगर उसका अकाउंट है जहां से वो इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है तो भी शायद वो ये पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एलिजिबल नहीं है। जो पेंशन इनकम उसे मिल रहा है दैट शुड आल्सो बी रिसीव्ड इन whatever one specified bank they are going to specify, उसी में उसका पेंशन अकाउंट होना चाहिए, उसी में वो पैसे डिपॉजिट करके उसमें से उसको इंटरेस्ट इनकम रिसीव होना चाहिए। इतना सारा क्राइटेरिया अगर फुलफिल करते हैं then there is this condition that the bank has to deduct the TDS, right? इसके बाद the senior citizen has to furnish a declaration to the bank कि ये पर्टिकुलर इनकम के अलावा उसका और कोई इनकम नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, whatever they give out the form and manner. And if all these conditions are fulfilled, the bank will deduct this person's TDS and then this person will not be required to file their return of income, right? So this has linked to the fact that there was certain relaxation given with regards to return filing for senior citizens. तो ये उसका corresponding section जो आया हुआ है कि ये senior citizens जो income receive कर रहे हैं उसके ऊपर वो बैंक ही TDS deduct कर देगा and then they will not be required to submit their return of income. So this looks to be a very difficult section as far as its implementation or execution is concerned क्योंकि 75-year-old plus person who is receiving only pension and making FDs out of those pension in that same bank account and only receiving interest income. So all this looks a little bit of difficult and very narrow in its scope, but let us see how the section spans out in the time to come. Right, let's go ahead. Now we come to the most important part, I would say, for discussion, which is TCS on sale of goods and section 194Q, which has come in the Finance Act 2021, which relates to TDS on purchase of goods.
So these two sections, I remember last year, October, TCS section had created a havoc because people were so unsure that how the same has to be applied, and by the time हम सब settle हो रहे हैं कि ये section actually कैसे apply करना है, तब तक ये लोगों ने हमें surprise कर दिया by bringing in section 194Q, which is in respect of TDS on purchase of goods, which is very much similar to the TCS provision. But then here the buyer is liable to deduct tax at source. So just give me a minute for a sip of water. You can see some question flashing in the chat box, which I saw. Whether 194N is applicable to a credit cooperative society. So you're asking in terms of they being the payer. So I think it talks about banks only. If we look at 194N, it says a banking company, a cooperative society which is engaged in carrying on the business of banking. So a cooperative society which is carrying on the business of banking is covered under 194N. Okay. Let's go to 206C1H and 194Q. Before I go on to both the sections, let me tell you how I'm going to take you through. First of all, हम दोनों सेक्शन का डिस्टिंक्शन देख लेंगे जो मैंने यहाँ पर पीपीटी में टैब्यूलेट करके आपके सामने प्रेजेंट किया है. इसके बाद हम टीसीएस वाले सेक्शन से रिजल्टेंट कुछ इश्यूज देखेंगे which are common to the some of the issues which 194Q brings up. And then we'll look at what can be the possible issues of 194Q and how the applicability of both the sections has to be checked. Right? So let's have a look. Who is liable for deduction and collection of tax? So under 194Q, which is the TDS provision, which is going to come into effect from 1st of July 2021, unless they decide to, kind of push it further, the buyer is liable to deduct tax at source. As far as the TCS provision on sale of goods is considered, the seller is liable to collect the tax at source. What is the criteria for the threshold or the turnover limit? So for both the sections, the limit is at INR 10 crores in the preceding financial year. मतलब पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में उनका टर्नओवर सेल्स या ग्रॉस रिसीट्स 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन 194Q के लिए ये क्राइटेरिया हम बायर पे अप्लाई करेंगे एंड 206C1H के लिए ये क्राइटेरिया हम सेलर पे अप्लाई कर रहे थे. तो फॉर एग्जांपल, इफ मिस्टर ए इज अ बायर ऑफ गुड्स एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि मिस्टर ए को टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत है या नहीं, तो हमें क्या असर्टेन करना है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में मिस्टर ए का टर्नओवर कितना था. अगर वो 10 करोड़ को क्रॉस कर रहा था तो फिर 21-22 के दौरान मिस्टर ए को टीडीएस डिडक्ट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. And in case of TCS, we are going to look at it from the seller's perspective. So even though the limit is same, here it is applicable for the buyer and here it is applicable from the seller's perspective. What is the threshold for the transaction of purchase or sale? माने purchase या sale के transaction में कितना amount cross किया तो ये TDS करने या TCS करने की जरूरत है. तो वहां पर भी limit same है, which is 50 lakhs. तो buyer अगर एक seller से during the year 50 lakhs से ज्यादा value के goods खरीदता है तो उसे इंक्रीमेंटल अमाउंट पे टीडीएस करना पड़ेगा अंडर 194Q, राइट. एंड सेलर के लिए ये कैसे ऑपरेट होता है कि सेलर ने अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को 50 lakhs के ऊपर का वैल्यू का गुड्स सेल किया था तो ऑन द इंक्रीमेंटल अमाउंट ही इज लायबल टू कलेक्ट टीसीएस फ्रॉम द बायर एट द गिवन रेट. Right? So the threshold is same, but the perspective of the transaction is obviously different. Now, what is the rate? Rate दोनों का same है 0.1% which is there.
what is the amount on which tax is to be deducted or collected. So अगर हम 194Q के perspective से बात करें तो यहाँ पर the amount of purchase which is in excess of INR 50 lakhs उसके ऊपर आपको TDS डिडक्ट करना है. एंड अगर हम 206C1H की बात करें तो द सेल कंसिडरेशन विच इज इन एक्सेस ऑफ INR 50 lakhs उसके ऊपर हम TCS कलेक्ट कर रहे थे. Next, very important point of distinction is when you are supposed to do the TDS or TCS. What is the trigger or what is the time? So for TDS, it is at the time of payment or credit, whichever is earlier. As far as the collection of tax at source is concerned, it is going to be at the time of receipt by the seller. So ये अगर अपने दिमाग में एकदम अच्छे से फिक्स्ड है तो then understanding the implication of this section becomes easier. Now what is the preference? अभी जैसे जुलाई 21 से 194Q ऑपरेटिव हो जाएगा एंड 206C1H भी ऑलरेडी स्टैट्यूट में है तो मुझे पहले कौन सा सेक्शन अप्लाई करना है. सो द TDS प्रोविजन विल बी फर्स्ट एप्लीकेबल. तो सबसे पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी और द प्रायोरिटी इज ऑफ द बायर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 194Q विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 21. Supposing the buyer has not done this or the buyer is ineligible because of not fulfilling the conditions which I just read out, then seller has to collect tax at source on sale of goods, right? But the first preference or the first priority or the first responsibility is of the buyer. So I'm assuming these base points for both the sections are very clear with all of us, and going on to the next slide. अभी हम 206C1H के कुछ खास पॉइंट्स देखते हैं. आई अग्री कि अभी तक ये सेटल हो गया है हम सब लोगों के लिए, बट देयर वर सम पॉइंट्स which had created a lot of issues last time, correct? So एक point ये था कि the section was made effective from 1st of October 2020. So what was the amount in respect of which this TCS provision was applicable? So it is applicable in respect of all the sale consideration which is received on or after 1st of October 2020. So इन्होंने जो ट्रिगर है वो पूरी तरह से रिसीट पे डाला हुआ है. तो चाहे वो एक सर्कुलर भी आया था इसके कनेक्शन में जो सितंबर मंथ में आया था. So whether it is the advance which is received, whether it is the consideration received for a sale which has taken place before 1st October 2020, in respect of every consideration which is received on or after 1st October 2020, the section becomes applicable. Right, that was the first point. Many of us might not agree with it. जैसे मुझे भी एडवांस पे TCS कलेक्ट करो वो पॉइंट बहुत जचता नहीं है, but that is what the circular said, and of course it is prone to litigation. Nothing is sure shot here, but then this is one particular aspect which we should keep in mind, that there was a circular which has come out to this effect. Second was what the circular clarified was the overlap with respect to 206C1F and 1H. Now just to give you an idea, 206C1F जो है वो TCS in respect of sale of motor cars के context में है. तो 206C1F जो है वो खाली उन सेल्स के लिए एप्लीकेबल है जो आप कंज्यूमर को करते हो और डीलर्स को नहीं करते हो. राइट, सो अगर आप डीलर को सेल कर रहे हो एंड वो 50 लाख के थ्रेशोल्ड, ओके, अगर वो थ्रेशोल्ड के ऊपर है, इन दैट केस 206C1H इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. करेक्ट. सो इन दोनों को बिल्कुल भी कंबाइन नहीं करना है, दोनों एक्सक्लूसिव है. अगर वन ऑफ अ केस में आपने कोई मोटर कार सेल किया देन द एप्लीकेबल प्रोविजन इज 206C1F. लेकिन अगर आपने डीलर्स को सेल किया हुआ है विच इज अबाउट द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 lakhs an year, then the applicable provisions are going to be 206C1H. करेक्ट. अच्छा, किसी भी तरह का सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट, इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह कुछ भी आप
एडजस्ट नहीं कर सकते व्हेन इट कम्स टू द रिसीट। सो यहाँ पर कैसे है, टीसीएस हमेशा रिसीट पर होता था। सो अगर कोई डिस्काउंट वगैरह है जो आपको आपने ऑफर किया है, तो द अमाउंट विच यू आर गोइंग टू रिसीव इज गोइंग टू बी नेट ऑफ द डिस्काउंट। तो टीसीएस जो करना है वो आपको अमाउंट रिसीव्ड पे करना होगा, एंड उस वजह से डिस्काउंट वगैरह वहां पर फैक्टर इन नहीं होगा। अच्छा, रही बात इनडायरेक्ट टैक्सेस की, जैसे जीएसटी कंपोनेंट इंक्लूड करना है या नहीं करना है, तो एक सेफ व्यू यहाँ पर सबने अज्यूम किया था कि यू इंक्लूड द जीएसटी कंपोनेंट एंड देन डू द टीसीएस। ऑल्सो ऑल्टरनेटिव व्यू भी पॉसिबल है, इसमें कुछ राइट या रॉन्ग एज सच नहीं है, बट काफी लोगों ने इस तरह का एडवाइस दिया था कि जीएसटी इंक्लूड करके आप टीसीएस करिए, बिकॉज द कंसिडरेशन एज सच का जो डेफिनेशन है उसमें जीएसटी शायद इंक्लूड होता है, ऐसा एक व्यू था, right? And there has not been any typical exclusion or anything which is specifying that GST has to be excluded or not till date, right? So this is one aspect. Third is the point of sale return. So sales return जो है वो usually later period में होते हैं, पहले आप sales include करोगे, आप एक particular period दोगे to pay out. So when you receive whatever is the consideration you receive, उस पे आपको TCS करना है. If the consideration amount is net of sales return, तो फिर वो amount पे करना है. अगर sales return उसमें factor in नहीं किया है, तो उतना amount आपको दोबारा फिर से adjust करना होगा. So this was what we had kind of discussed. Also बहुत लोगों ने ये भी questions पूछे थे कि whether this TCS amount has to be included in the invoice or what. So there also we had advised people that it would be better if you raise a separate debit note with regards to the TCS amount rather than putting it in the invoice. Otherwise, if you want to put it in the invoice also, there will be a reconciliation which you will anyways have to do कि कौन से receipt के सामने ये particular amount collect किया गया है and वो कभी डिपॉजिट किया गया है. सो आई एम श्योर जो लोगों के क्लाइंट्स ये पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके जिनको ये प्रोविजंस एप्लीकेबल है, दे हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ कंप्लायंस बर्डन विद रिगार्ड्स टू द प्रोविजंस ऑफ 206C1H. सो ये कुछ प्रैक्टिकल इश्यूज थे 206C1H को लेकर, जिसपे हम आगे भी अभी बात करेंगे. अभी थोड़े कॉन्सेप्चुअल इश्यूज देख लेते हैं. सो अगर हम देखते हैं तो 206C1H और 194Q दोनों भी सेक्शंस TCS एंड TDS इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन दोनों में से किसी भी सेक्शन ने गुड्स को डिफाइन नहीं किया हुआ है, राइट? सो इनकम टैक्स एक्ट में भी गुड्स का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है. So in these circumstances, it is very difficult कि हम goods को किस तरह interpret करें, because as such anything which is marketable and saleable in the market is goods, right? So यहाँ पर हम दो acts को refer कर सकते हैं. One is the Sale of Goods Act and one is the GST Act, which has definition of goods as such. सो जीएसटी एक्ट अगर हम देखते हैं तो दोनों में शेयर्स एंड सिक्योरिटीज को इंक्लूड किया गया है गुड्स के डेफिनेशन में. एक बात यहाँ पर कंफर्म है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी इज केप्ट आउटसाइड ऑफ द मीनिंग ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ बोथ दीज सेक्शंस. That is somehow clear. But let us see what is the position with regards to shares and securities. So as a person, you could be a dealer or you could be an investor who is holding shares and securities. अभी अगर आप investor हो तो आपने ये shares and securities एक long term perspective से खरीदा हुआ है और एक investment angle से खरीदा है, तो those cannot be treated as your goods. Right? So an investor selling his unlisted or listed shares and they falling in the purview of goods is a far stretched situation, and this is not covered under either 206C1H or 194Q. Now let us look at the perspective of a dealer in shares and securities. तो जिस circular की मैं बात कर रही थी जो I think so 29 सितंबर को आया था, उसने एक एक्सक्लूजन किया था कि if a person is selling any kind of shares or securities or commodities which are sold through recognized exchanges, then selling shares and securities through recognized exchanges on which STT has been paid, then those shares and securities will not be covered under the meaning of the term goods.
सो सर्कुलर ने जो एक्सक्लूजन दिया था वो खाली एसटीटी पेड ट्रांजैक्शंस के लिए था। तो अगर डीलर ऑफ शेयर्स जो है वो अनलिस्टेड शेयर्स या सिक्योरिटीज को सेल करता है या ऐसे कोई सेल में एंगेज करता है जो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं हुआ है, जिस पे एसटीटी पे नहीं हुआ है, तो शायद उसके कॉन्टेक्स्ट में 206C1H और 194Q अब की बात अप्लाई हो सकता है। Now this is just a view which I am taking because the circular makes an exclusion in respect of listed shares, but it is silent as far as unlisted shares and securities is concerned. Investor is outside the scope because an investor doesn't hold these shares and securities as his goods. Next is whether software and other intangibles, can they be said to be covered under this definition of goods for the purpose of 206C1H and 194Q. सो अभी यहाँ पर ऐसा है कि जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे डिसीजंस हैं कहीं कहीं पर विच आर सेइंग दैट सॉफ्टवेयर और अदर इंटेंजिबल्स आर क्लासिफाइड एज गुड्स. Now, in the income tax context, whether we can consider them to be goods or no is something which is slightly debatable. But then, to be safe and unless and until there is a specific exclusion, it is safe to assume that even sale of software or sale of licenses or other intangibles will be covered by 206C1H and also now 194Q. Right, so this is one aspect. Second is, this is in the context of 206C1H, right? If you look at the earlier provisions of TCS, जे आधीचे provisions आहेत 206C1A वगैरे, they have a specific carve out, right, for business to business transactions. So let us say I am a person who's engaged in some kind of business activity and I am purchasing goods from another person which are to be used for my business. I'm going to process them further and then I'm going to sell them. So 206C1A, which was the earlier section for TCS, it specifically says that if the person is going to use those goods for his business, add value to it and then sell it, it is outside the scope of TCS. But there's nothing similar which has come out for 206C1H. So even though I am a particular person who's buying goods from a person and I'm going to use them in my business, the seller will still collect TCS. Current B2B transactions, they have not been specifically carved out, right? So that is one important point. They should have ideally done that because otherwise it is just collecting TCS at so many levels, right? Third is again a very interesting point, whether goods sold to SEZ and EOU units. So those units which are located in special economic zones or 100% export oriented units, उनको अगर हमने कुछ goods sell किया तो whether they are liable for TCS. Now why I ask this is because 206C1H अगर आप देखेंगे तो उसमें एक particular exclusion है which says that goods exported outside India are not covered by these provisions. Correct? Now these SEZ or EOU units have been given similar status as export, right? उनको अगर हम कुछ sell वगैरह करते हैं तो they are treated as if an export is being made. So whether that sale has to be considered as export and whether it should be outside the scope of TCS. But here, I would like to take a literal interpretation. अगर आप 206C1H देखेंगे तो उधर लिखा हुआ है goods exported out of India. So typically जो ये SEZ and EOU units होते हैं वो इंडिया में ही लोकेटेड होते हैं, तो उनको अगर आप कुछ सेल कर रहे हैं तो वो इंडिया से बाहर नहीं जा रहा है, भले उनको एक डीम्ड स्टेटस दिया हुआ है कि इट विल बी ट्रीटेड एज एक्सपोर्ट. सो द व्यू हियर इज दैट दोज विल स्टिल बी लायबल फॉर TCS, राइट?
नेक्स्ट इज अ वेरी वेरी बर्निंग क्वेश्चन विच आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आया है, आया होगा, एंड अभी 194Q के कॉन्टेक्स्ट में इट्स जस्ट काइंड ऑफ रिवाइव्ड इटसेल्फ. सो हाउ डज वन डिटरमाइन टर्नओवर? माने ये जो जीएसटी कंपोनेंट है, जो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वेदर वी शुड इंक्लूड दैट एंड देन डिटरमाइन माय टर्नओवर, और वेदर दोज शुड बी केप्ट आउटसाइड द आई मीन थ्रेशोल्ड व्हेन आई एम डिटरमाइनिंग टर्नओवर. सो ये टर्नओवर डिटर्मिनेशन कब रेलेवेंट है? क्योंकि हमें डिटरमाइन करना है कि बायर या सेलर TDS या TCS कर सकता है या नहीं. So then we have to look at the 10 crore perspective, and that 10 crore determination of turnover, whether we have to include GST or we have to exclude GST and other indirect taxes, of course. So here, you know, unfortunately, neither 2060-1H nor the 194Q section, which has come out recently, has given any definition for turnover. So that makes it very difficult, and turnover then has to be understood in what is the general understanding, right? So agar, just give me a minute, there's some disturbance. Okay, so if you look at both the sections that are there, right, neither of them have given you the definition of the term turnover. Now, if you look at the Income Tax Act also, there is no particular definition of turnover given in section 2. So that will leave us with a common understanding of the term. So it largely depends on the method of accounting which the assessee adopts, you know, कि किस तरह से उसका turnover हम determine करेंगे. तो अगर inclusive method adopt कर रहा है, exclusive method adopt कर रहा है, I think that will be something which will play an important role to determine it. कहीं कहीं पर कुछ आर्टिकल्स मैंने पढ़े थे बड़े बड़े लोगों के, सो दे आर ऑफ द व्यू दैट जीएसटी और अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच आर कलेक्टेड शुड फॉर्म अ पार्ट ऑफ टर्नओवर व्हेन यू आर डिटरमाइनिंग दैट क्राइटेरिया ऑफ 10 crores. So of course this point is likely to come up again when we have the Q&A session, so I will leave more discussion for that at that time. Also, since we are at this juncture when we are looking at what turnover is और इसको कैसे interpret करना है, एक interesting चीज आती है कि ये जो gross receipts, sale and turnover from business, इस तरह का terms जो use किया गया है, right? इनका भी कुछ meaning होना चाहिए था to be more specific, but this is what we usually understand कि भाई business करके जो भी हमारा receipts है या sales है, that has to cross that 10 crores, and the only question which remains open here is inclusion of indirect taxes etc. in the determination amount. Okay, now we'll look at some specific points of 194Q, right, which is very important to understand and to advise to our clients, because unless the government takes some step and defers it like they did last year, it is certainly going to come into force from 1st of July 21. Now, this section is not applicable in cases where other TDS sections are applicable. So, कहीं कहीं कुछ ओवरलैपिंग अगर रहा जहां पर दूसरे टीडीएस के सेक्शन एप्लीकेबल है तो 194Q एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? टीसीएस से जो ट्रांजैक्शंस कवर्ड हैं अदर देन टीसीएस ऑन गुड्स, माने 206C1H के अलावा दूसरे ट्रांजैक्शंस जहां पर टीसीएस प्रोविजंस एप्लीकेबल है, जैसे सेल ऑफ मोटर कार है, स्क्रैप है, लिकर है एक्सेट्रा, वो पर्टिकुलर चीजों पे भी 194Q अप्लाई नहीं होगा. और जब 194Q और 206C1H को हम बात करेंगे साथ में अप्लाई होने की, तो नेचुरली अगर दोनों सेट ऑफ बायर एंड सेलर सारे कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं तो प्रेसिडेंस मिलेगा 194Q को. इन द इवेंट के बायर 194Q नहीं करता है फॉर सम रीजन, then seller will be under an obligation to collect tax under 206C1H, right? अभी अगर पैन फर्निश नहीं किया है
सेलर ने, तो TDS जो है वो 0.1% के बदले 5% से होगा, and this section is as of now going to come into effect from 1st of July 21. Now, what are the issues which we can see which are specific to 194Q? जो पहले के स्लाइड में मैंने डिस्कस किया, जो कॉन्सेप्चुअल इश्यूज था, they are common to both 206C1H also and 194Q also. But what are the peculiar issues of 194Q? कौन सी दिक्कतें आएंगी जो 194Q के लिए स्पेसिफिक है? अब पहला तो सबसे पहला पॉइंट ये होगा कि ये जो 50 लाख का थ्रेशोल्ड है पर ट्रांजैक्शन, सेक्शन जुलाई से इफेक्टिव हो रहा है, तो क्या हमें अप्रैल से जून तक के पीरियड के परचेजेस इंक्लूड करने होंगे या नहीं टू डिटरमाइन द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 lakhs? तो इसका जवाब ऑब्वियसली यस है, क्योंकि अगर हम देखें तो अपने पास प्रेसिडेंस भी है लास्ट ईयर का जो सर्कुलर था वो, प्लस लॉजिकली व्हेन वी स्पीक ऑफ थ्रेशोल्ड इट इज यूजुअली फॉर द एंटायर प्रीवियस ईयर। तो भले सेक्शन एक पर्टिकुलर डेट से इफेक्टिव हुआ है, थ्रेशोल्ड जो है वो आपको पूरे ईयर के लिए देखना होता है, एंड देयरफॉर परचेजेस फ्रॉम द पीरियड 1st April to 30th June would be included in counting the criteria of 50 lakhs unless they decide to come out with something contrary. Okay. Second thing is whether a non-resident buyer will be liable to deduct TDS on purchase from a resident seller. राइट, सो वापस अगर आप 194Q के लैंग्वेज को देखते हैं तो पेयर की बात जब होती है, राइट, इट इज सिंपली सेइंग एनी पर्सन बीइंग अ बायर हु इज रिस्पांसिबल फॉर पेइंग सो एंड सो सो एंड सो सो एंड सो। तो दे आर वेरी स्पेसिफिक कि जो सेलर है वो रेसिडेंट होना चाहिए, लेकिन बायर का रेसिडेंशियल स्टेटस दे हैव नॉट स्पेसिफाइड, जस्ट लाइक इन सेक्शन 194O, जस्ट लाइक इन सेक्शन 194M which we discussed earlier in our presentation. सो नॉन रेसिडेंट बायर को भी TDS करना पड़ेगा अगर वो बाकी के सारे कंडीशंस कंप्लाई कर रहा है, एंड इफ ही इज अदरवाइज कवर्ड बाय द ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट TDS, राइट। थर्ड इशू हियर इज 206C1H में जो था वहां पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स was specifically excluded from TCS. So I'll just tell you the precise wordings, right? So if you look at the BEAR Act and the way 206C1H was worded, it says that other than goods exported outside India, correct? So exports have been excluded from the purpose of TCS under 206C1H, but ऐसा कुछ similar exclusion in terms of goods which are brought from outside India etc. has not been provided in case of 194Q, though they have specifically stated that the buyer is a resident. Maybe that could have some kind of implication here. Sorry, someone was saying something. Okay. No, ma'am. No. Okay, sorry. Next is a very, very important point which has to be kept in mind is with regards to the disallowance under 40A1A. Now, for non-compliance with TDS provisions, the resident payer or a resident or non-resident payer has to suffer a business disallowance also in computing his business income. So for a non-deduction of mere 0.1% of TDS, 30% of his expenditure incurred in respect of the purchase transaction can stand at a risk of being disallowed. Now this is a very serious repercussion of this section. Correct. So एक छोटे से default के लिए there is the disallowance in computing business income can really be a big amount. So this is something which we need to acquaint our clients with. Now these are typical issues which are coming out of 194Q. Right. Now I would just like to discuss one situation with you.
अभी कई बार हमें ये क्वेश्चन आएगा कि वेदर 206C1H is going to be applicable or 194Q is going to be applicable. So we just need to keep in mind that if the buyer and the seller both are fulfilling all the conditions stipulated by each of the section. So I would just like to take you back to this table which I said. So अगर buyer ये सारे condition fulfill कर रहा है और seller भी कर रहा है in respect of the same 50 lakh का transaction we are talking, then naturally 194Q will take precedence and you will have to deduct TDS. The buyer will have to deduct TDS. But suppose in case of a transaction where the threshold for purchase and sale has crossed 50 lakhs, right? But the buyer is not fulfilling this condition of turnover exceeding 10 crores in the immediately preceding year. If the buyer is not fulfilling this particular condition, but the value of that single transaction has crossed 50 lakhs, and the seller is fulfilling his condition of the turnover exceeding 10 crores criteria, then naturally the buyer is not liable to deduct TDS because he is not eligible or he is not fulfilling the criteria. In that case, naturally the seller will have to collect TCS because he is fulfilling this condition. So both the sections cannot be made applicable if the buyer and seller both are fulfilling their respective conditions. In that event, 194Q takes precedence. But for some reason, if the buyer is not eligible or the threshold is not met and it is the seller who is complying with the conditions, then naturally 206C1H is still in place. So if anybody has a question that 206C1H क्या अभी redundant हो गया है 194Q के आने की वजह से, तो उसका आंसर इज नो, बिकॉज ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि बायर एक पर्टिकुलर कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है, सेलर उसको कंप्लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली द सेलर इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू कलेक्ट TCS. Yes, it could be the opposite also. Maybe seller का turnover जो है वो preceding years में 10 crore cross नहीं किया, but buyer का turnover 10 crore cross किया, तो naturally 194Q will come into picture. The question of which section gets a preference arises only if both of them are liable. So if both of them are liable, then buyer is the first person who has to do it. Correct? Okay. So this was all about 194Q and 206C1H. I am very sure कि इससे ज़्यादा बहुत सारे issues इसमें आएंगे, and as we proceed in time with the section coming into force, in reality there will be lot of more issues which we'll be facing. Right now, we'll go on to the next part of the amendment which is there. In the meanwhile, if there are any questions which the members have with regards to this, I would request them to put it in the chat box so that we can take them towards the end of the session. Now, another draconian provision which has come into the statute by virtue of Finance Act 2021, 21, sorry, is this 206AB. ये ऐसा provision है which all of us has to understand, and we have to make our clients aware of this because it is going to have real bad implications if we tend to ignore it. So what is this particular provision talking about? So जैसे हमने देखा कि 194N में उन्होंने कुछ अलग threshold बोले थे for people who have not filed their return of income. उन्होंने अभी एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है जो काइंड ऑफ एक ब्लैंकेट सेक्शन है कि सारे नॉन फाइलर्स ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम के लिए हम हायर रेट ऑफ TDS एंड TCS प्रपोज करते हैं, right, which is under the number 206AB. So who are non-filers in this connection? So non-filers have been defined as people who have not furnished their return of income in two immediately preceding previous years prior to the previous year in which tax is required to be deducted. माने वो particular year में जब TDS करना चाहिए
उसके इमीडिएटली 2 पहले वाले सालों में इन्होंने रिटर्न ऑफ इनकम सबमिट नहीं किया है, और वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए 139(1) का जो टाइमलाइन है फॉर सबमिटिंग रिटर्न वो एक्सपायर हो चुका है, राइट। इसके साथ साथ एडिशनल कंडीशन है, द एग्रीगेट ऑफ TDS एंड TCS which had to be deducted in each of these previous years is 50,000 rupees or more, करेक्ट। सो ये क्यूमुलेटिव क्राइटेरिया है, इन लोगों ने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया है एंड जो TDS या TCS अमाउंट है इन ईच ऑफ दीज 2 previous years is more than 50,000 rupees. So if this twofold criteria is met, then with effect from 1st July 21, the TDS or TCS for these people will be deducted at the higher of these rates. क्या रेट्स बोले हैं उन्होंने? फर्स्ट इज ट्वाइस द रेट विच इज स्पेसिफाइड इन द रेलेवेंट प्रोविजन, माने जिस किसी सेक्शन के अंडर TDS करना चाहिए था उसका डबल रेट। सो जैसे अगर हम 194J की बात करें तो समझो प्रोफेशनल फीस है तो 10% रेट था, तो उसका डबल हो जाता है 20%। twice the rates in force. So rates in force is basically जो आपका usual rates applicable है या जो special rates है, जो rates applicable है कहीं पर treaty वगैरह आ जाता है तो उसका twice. So whatever the rates in force applicable, double of that, or at the rate of 5%. So in इसमें से जो higher है that would be the rate of TDS. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, अगर आपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं किया है और साथ साथ आपने पैन भी सबमिट नहीं किया है तो 206 AA भी एप्लीकेबल हो जाता है, राइट। एंड 206 AA एप्लीकेबल हो जाएगा तो क्या होगा, 206 AB में से जो आपका ये हायर आया वो, या फिर 206 AA माने नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन वाला जो रेट हायर आएगा, दोनों में से जो ज्यादा है दैट विल बी द रेट विच विल बी एप्लीकेबल। अभी आपको मैं एक एकेडमिक पॉइंट यहाँ पर बोलूं तो दोनों 206 AB एंड 206 AA जो है दे बिगिन विद अ नॉन ऑब्स्टैंटे क्लॉज, माने दोनों ही सेक्शन नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड से शुरू होते हैं, राइट। सो यूजुअली जब कोई सेक्शन ये वर्ड्स से शुरू होता है तो दोनों में से एक ही सेक्शन एप्लीकेबल हो सकता है। I hope you are getting me. So 206 AB or 206 AA, either of the section is to be applicable technically because both are beginning with notwithstanding. लेकिन इन्होंने जब अमेंडमेंट लाया है तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 206 AA के अंदर इन्होंने 206 AB के अंदर अमेंडमेंट आई मीन एक सबसेक्शन इंसर्ट किया है ये बोलते हुए कि इफ द प्रोविजंस ऑफ 206 AA आर एप्लीकेबल देन TDS विल बी डन एट हायर ऑफ द रेट्स ऑफ 206 AA और 206 AB, माने इन द सेक्शन दे हैव एनेबल्ड इट कि ये सेक्शन को भी कंसिडर करें, नहीं तो यूजुअली दोनों में से एक सेक्शन एप्लीकेबल होता, बट आपको दोनों के हायर रेट्स अभी ध्यान में रखने हैं। एंड दिस इज अगेन नॉट एप्लीकेबल टू अ नॉन रेसिडेंट हु इज नॉट हैविंग अ PE। तो अगर नॉन रेसिडेंट का PE है तो दिस सेक्शन विल बिकम एप्लीकेबल, बट अगर उसका PE नहीं है देन दिस पर्टिकुलर सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल। Right, now let us see what are the exclusions from this particular section 206 AB, माने कौन कौन से TDS के रिस्पेक्ट में ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। So where the payment is in the nature of salary, income or payment of accumulated PF balances, that is excluded. आपका सारे कैजुअल इनकम इन द नेचर ऑफ लॉटरी विनिंग, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेसेस एक्सेट्रा इज एक्सक्लूडेड. Income from investment in securitization trust is excluded, and 194N जो अपना कैश विड्रॉल्स का सेक्शन था that has also been excluded क्योंकि उधर ऑलरेडी उन्होंने नॉन फाइलर्स के इशू को टैकल कर लिया है, राइट। यहाँ पे मैंने एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है
which will come ahead. So this is a comparison के 206 AA जो PAN वाला section है and 206 AB जो ये नया section है, वो दोनों अगर applicable हो रहे हैं तो how do we determine the applicable rate? So like you can see 206 AA says the rate in the specified relevant provision, the rates in force or the rate of 20%. So higher of that is A. 206 AB says twice the rate specified in the relevant provision, right? या फिर twice the rates in force या फिर 5% higher of the above. अभी दोनों सेक्शन अगर एसएससी ने पैन भी फर्निश नहीं किया है और अगर रिटर्न भी फाइल नहीं किया है तो उसका जो रेट ऑफ टीडीएस होगा दैट विल बी हायर ऑफ ए एंड बी, करेक्ट? सो ये जो लिखा है मैंने वो ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. सो आई जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. अभी यहाँ पर एक मैंने ये टैब्यूलेटेड वर्जन आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से 206 AB एप्लीकेबल होगा एंड आई थिंक हम सबको इससे अक्वेंट होना चाहिए क्योंकि क्लाइंट्स को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर वो इसे कंप्लाई नहीं करते हैं तो दे कुड बी पेयर्स, दे कुड बी पेइज. ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे तब होगी जब क्लाइंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग TDS. कहीं वो कम रेट से डिडक्ट कर लेगा तो ही विल बी ट्रीटेड एज असेसी इन डिफॉल्ट. So let us go through the table quickly. So यहाँ पर एक status है कि filed the return of income for AY 2021 and for AY 21-22 मैंने लिया हुआ है क्योंकि सेक्शन का applicability जुलाई onwards है. So मान लीजिए उसने दोनों years के लिए return of income furnish किया है. उसका total of TDS and TCS in respect of AY 2021 was more than 50. In 21-22 also it is more than 50. Then whether X will be treated as specified person? The answer is no because he has complied with the condition of filing return of income. मान लीजिए X ने 2021 के लिए रिटर्न फाइल किया है, 21-22 के लिए नहीं किया है एंड दोनों ही असेसमेंट ईयर्स में द अमाउंट ऑफ TDS which was supposed to be deducted is more than 50,000 rupees. Whether he will be treated as specified person, right? So the answer here is no, return of income is not filed for AY 21-22. There is some okay, so इधर yes आना चाहिए technically. Now if he's filed his return of income for 2021, for 21-22 he has filed, for 2021 he has not filed, and for both the years the amount of TDS and TCS in respect of 2021 and 21-22 is more than 50,000. Whether he'll be treated as specified person, the answer is yes because he is not filed return of income for assessment year for AY 2021. So the point here is the conditions that are there are cumulative, that your return of income should be filed for both AY 2021 and 21-22 before the due date, and the TDS and TCS in respect of both these years should have been more than 50,000. So if the TDS is more than 50,000 rupees and you have furnished your return of income, then you're not going to technically be a specified person. But if you have not furnished your return of income and the amount of TDS, like please look at the point I'm highlighting with the mouse. If you have not filed your return of income for the 2 years in question and the amount of TDS and TCS in both the years is crossing the 50,000 threshold, then you will be treated as specified person. Correct? So either in one of the years if your TDS amount is less, or either in one of the years you have filed your return of income, you will then not be treated as a specified person. That is how I have tried to interpret the provision. But like I say, if there is when it actually becomes applicable with effect from July, we'll know how far and how widespread its implications are going to be, right? Now
This is again an extension of the table. I think I'll not repeat it because it is kind of monotonous to read it out. I would like to point out the issues. See, when we discussed about 194N, I told you there was a portal which has been provided by the CBDT for scheduled commercial banks to check the return filing status. अभी ऐसा कुछ सिमिलर स्टेटस या पोर्टल अभी तक 206 AB के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने नोटिफाई नहीं किया है. हो सकता है कि जब से सेक्शन इफेक्टिव हो जाए तब से वो कुछ पोर्टल का लिंक वगैरह शेयर करे, बट स्टिल इट इज गोइंग टू बी अ चैलेंज क्योंकि वहां पर जो पेयर्स थे वो बैंक्स थे. यहाँ पर every person who is liable to deduct TDS will have to ensure compliance with this particular provision for the payee. सो हर एक पेमेंट जो मैं करती हूँ ड्यूरिंग द ईयर, वो जिस पर्सन को कर रही हूँ उसने पिछले 2 साल के रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किए हैं या नहीं, ये मुझे हर बार चेक करना होगा. एंड इफ इट इज अ कंटिन्यूइंग पेमेंट, माने जैसे समझो मैंने जब भी पेमेंट किया अप्रैल महीने में, तो past 2 years is the earlier previous year and उसका earlier previous year. For example, if I am paying in April 21, I will check the return filing status for 2020, 19, 20 and 18, 19. But after I make the payment in, let us say, August 21 or September 21, which is after the due date of filing return for July, so then again immediately my year changes to 2021 and 1920. सो ये जो प्रीवियस 2 years है ये कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट होंगे जैसे जैसे आप पेमेंट करते जाओगे, राइट. सो वो एक यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है. एंड इसके अलावा पीपल वुड नॉट वांट टू शेयर देयर डिटेल्स कि उन्होंने रिटर्न फाइल किया है. व्हाट काइंड ऑफ कंफर्मेशन कैन यू आस्क फ्रॉम देम? ITR-V वगैरह तो हम ले नहीं सकते हैं बिकॉज दैट बिकम्स देयर पर्सनल इनकम डेटा विच दे माइट नॉट वांट टू शेयर. सो मे बी यहाँ पर हम किसी तरह का डिक्लेरेशन ऑब्टेन कर सकते हैं या फिर CBDT हैज टू कम आउट विथ सम काइंड ऑफ portal like they provided to banks to check this particular status. The bottom line is it is going to be extremely difficult to check these conditions for all the persons to whom you are making payments and are responsible to deduct TDS. And as a person who is making those payments, you will come into the defaulter list because then you will be treated as assessee in default. So it is very important कि हम हमारे clients को ये section के बारे में educate करें and give them some proper kind of benchmarks कि how do they ensure compliance with the same. Now, this is about the foreign remittances and all, but I would like to just ensure whether you want me to go ahead with this or should we spend the next 15 minutes taking questions. Hello. Madam, Yes. Hello. Participants, if you have questions, please ask. If you want me to go ahead with this tour remittance provisions, I would do that. If there are questions, we can take them. Okay, madam. After completing this, we will take a question and answer. Okay, fine. So these are the provisions of section 206C1G, which came along with 206C1H. Right now, these are in respect of amounts which are in respect of remittances made outside India, and also under the for buying foreign tour packages or under LRS. Right. So here there is an authorized dealer who is receiving an amount which is to be remitted outside India from a person under the LRS quota that is there, right? Or it is a person who is selling an overseas tour program package who is receiving the money from a buyer of such package. So at the time of debiting the amount which is payable by the buyer or at the time of receipt of amount from the buyer, whichever is earlier. So in case of remittance, it will be receiving the amount. And if the person is buying some foreign tour package, it will be the
debit period or the receipt of amount, whatever is earlier, there'll be a TCS which will be collected from the buyer at 5% of such amount, right? Now, if the amount is being percent under the LRS quota, then the authorized, there is a relaxation which is given, which is up to 7 lakh rupees in a financial year. Right? So the authorized dealer is not required to collect the TCS if the amount or aggregate of amounts which are remitted by a buyer is less than 7 lakh rupees. Correct. Also, if it is for a purpose other than purchase of overseas tour program package. So the point is, if you are purchasing overseas tour program package, then the 7 lakh rupee relaxation is not there. टूर प्रोग्राम पैकेज अगर आप खरीद रहे हो तो कोई मिनिमम क्राइटेरिया वहां पर नहीं दिया गया है. एनी अमाउंट विच यू आर परचेजिंग इट फॉर इज लायबल फॉर टीसीएस. अगर आप एलआरएस के अंडर वो अमाउंट इंडिया के बाहर रेमिट कर रहे हैं तो फिर 7 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल ईयर का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है. अदर दैन दैट, अगर आपने ये अमाउंट जो है विच इज a loan which is there, right? So if the authorized dealer is going, if the amount which is being remitted is in the context of a loan which is taken from any which is taken for pursuing any higher education from a financial institution, then the rate of TCS has been reduced to 1.5%, right? So ये remittance अगर एजुकेशन पर्पस के लिए किया जा रहा है और ये पैसे जो रेमिट किए जा रहे हैं वो बाय वे ऑफ लोन अगर लिया गया है, देन देयर इज अ लोअर टीसीएस विच इज स्टिपुलेटेड. सो 5% के बदले इट विल बी एट 1.5%. So these are the highlights of the provisos which I have put in here. So this is a more simpler to understand. So the person who is collecting tax is the authorized dealer, right? उसने जो aggregate amounts receive किए हैं, they are otherwise than for purchase of overseas tour program package, and वो 7 लाख से कम है in one financial year, तो there is no requirement for collecting TCS. टूर प्रोग्राम पैकेज अगर आप खरीद रहे हैं तो 7 लाख का थ्रेशोल्ड आपको चेक नहीं करना है. इन ऑल सर्कमस्टेंसेस टीसीएस इज गोइंग टू बी मेड, राइट? अभी यूजुअली ऑथराइज्ड डीलर्स जो होते हैं वो कभी कभी दे यूज द एलआरएस कोटा ओनली. Like for example, let us say I'll give you a practical example so that it makes things simpler. Suppose I book a particular tour package, a overseas tour package from say Hina Tours. तो मैंने हीना टूर्स से एक 10 दिन का यूरोप टूर बुक किया है जिसके लिए मैंने से 3.5 लाख रुपीज उनको पे किया है. सो अभी इसका इम्प्लीकेशन ऐसे होगा कि हीना टूर्स विल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू कलेक्ट 5% more, माने 3,50,000 का 5% they will collect from me on account of TCS and pay it to the government in the designated manner. तो ये ओवरसीज टूर प्रोग्राम के लिए है. बट सपोज मुझे इंडिया के बाहर पैसे भेजने हैं इन वन फाइनेंशियल ईयर, तो मुझे एक 7 लाख का इन्होंने रिलैक्सेशन दिया हुआ है इन वन फाइनेंशियल ईयर, एंड द मोमेंट आई क्रॉस दैट थ्रेशोल्ड ओनली देन द TCS प्रोविजंस विल कम इनटू पिक्चर. बट कभी कभी क्या होता है, ये जो टूर ऑपरेटर्स आपसे पैसा लेते हैं दे इन टर्न गिव इट टू अ ऑथराइज्ड डीलर. तो जैसे हीना टूर्स ने समझो एक ग्रुप टूर ऑर्गेनाइज किया है जिसमें 10 लोग हैं और सभी से उसने 3,50,000 कलेक्ट किया है. अभी हीना टूर्स को वहां पर ऑन बोर्डिंग एक्सपेंसेस करना होगा, माने इट विल हैव टू बुक सम लॉजिंग और एकोमोडेशन इन यूरोप, या फिर वहां इंटरनली ट्रैवल करने के लिए अरेंजमेंट्स करने होंगे. तो ये पर्पस के लिए हीना टूर इज नाउ गोइंग टू पे टू देयर पर्टिकुलर पार्टी विच इज आउटसाइड इंडिया, जिसके लिए इट इज गोइंग टू अप्रोच अ ऑथराइज्ड डीलर, राइट? सो लेट अस से मिस्टर एक्स ने टूर बुक करी है, मिस्टर एक्स ने 3,50,000 पे किया, हीना टूर्स ने उसे कलेक्ट किया, एंड हीना टूर्स अभी यूरोप में किसी पर्टिकुलर होटल में मिस्टर एक्स के नाम से बुकिंग कर रहा है जहां पर उसे पेमेंट करना है टू ब्लॉक हिज रिजर्वेशन. So for making this particular payment outside India, Hina Tours fellow is going to approach an authorized dealer.
and this authorized dealer is going to use Mr. X's LRS quota only. इसीलिए ये ऊपर पॉइंट लिखा गया है कि जब भी हम टूर प्रोग्राम पैकेज का बात करते हैं तो 7 lakhs का एग्जेम्पशन हमें नहीं देखना है. फॉर वॉट एवर अमाउंट यू आर पेइंग आउटसाइड इंडिया यू आर गोइंग टू कलेक्ट TCS. अभी इसमें एक दिक्कत ऐसी हो सकती थी कि हीना टूर्स ने आपसे 3,50,000 पे 5% TCS कलेक्ट किया. वो 3,50,000 में से उन्होंने 2,50,000 ऑथोराइज डीलर को दे दिया फॉर पेइंग आउटसाइड इंडिया ऑन द कोटा ऑफ मिस्टर एक्स. तो अभी एक चैलेंज यहाँ पर ऐसे था, क्या फिर से ऑथोराइज डीलर भी TCS कलेक्ट करेगा, क्योंकि ये अभी first transaction was purchase of tour package and second transaction is sending money outside India for making a hotel reservation, right? So in this case there is a proviso which has been added to this section which says that अगर पहले TCS collect हो चुका है and अभी authorized dealer खाली वो tour package के behalf पे कुछ पैसे इंडिया के बाहर send कर रहा है, तो दोबारा से ये TCS collect नहीं करेंगे. ये रिलैक्सेशन एडीज को दिया गया है क्योंकि यहाँ पर टूर ऑपरेटर ने ऑलरेडी TCS कलेक्ट कर लिया, नहीं तो कस्टमर को 2 बार उसका इफेक्ट बेयर करना पड़ेगा. So this is one logical point which I wanted to say for this section. Going ahead, loan wala point I said that there is a lower rate of TCS there. Okay. I said 1.5. I'm sorry, it's 0.5%. Now, buyer के अंदर this particular the fourth proviso is what I just discussed. Buyer के definition में ये सारे लोग covered नहीं हैं. So central government, state government, embassies, high commission, etc., or a local authority which is defined under 1020, or a person who is importing goods into India, or any other person which is specified will be excluded from the meaning of the term buyer, right? Authorized dealer is again the person who is defined under the RBI Act. Overseas tour program packages, any tour package which offers visit to outside countries, it will also include your boarding, lodging expenses and travel expenses. Now there are 2-3 issues here which I would like to discuss. So I have discussed the crux of this section under LRS. If you are remitting, there is a threshold criteria of 7 lakhs. Tour packages, if you are acquiring, there is no threshold criteria. Tour operators paying to ADs under the same person's LRS, there will be no double TCS. Now these are few issues which I would like to bring out, right? So सबसे पहले अगर होटल बुकिंग या एनी अदर रेमिटेंसेस इंडिविजुअल ने खुद किया है to overseas entities, जैसे मैं ट्रैवल करना चाह रही हूँ but I have not gone to any tour operator to purchase any package and I have made all the bookings on my own, right? In that case what will be the implication? माने अभी मैं मेरा LRS कोटा खुद यूज कर रही हूँ तो मुझे 7 lakhs का रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो यहाँ पर इंटेंशन काफी क्लियर है. अगर आपका पर्पस ओवरसीज ट्रैवल है वेकेशन या टूर के लिए तो 7 lakhs का रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलना है. फिर आपने खुद से भी अगर आपका ट्रैवल अरेंजमेंट्स किया होगा और डायरेक्टली मनी एडी के थ्रू बाहर रेमिट किया होगा तो भी TCS करना पड़ेगा बिकॉज 7 lakhs इज ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्पस अदर देन ट्रैवल. रेमिटेंसेस फॉर एजुकेशनल पर्पस, यहाँ पर 2 चीजें हैं. अगर वो रेमिटेंस ऐसे पैसे से किया गया है जो असेसी ने बोरो किया है फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन देयर इज अ लोअर TCS. इफ इट इज फ्रॉम ओन फंड्स और जैसे किसी फैमिली मेंबर्स वगैरह से लोन लेके रेमिट किया गया है तो अगेन द रेट इज 5%. रेमिटेंसेस फॉर मेडिकल पर्पसेस के लिए भी इन्होंने कोई रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं किया हुआ है. अभी नेक्स्ट यहाँ पर आता है करेंसी सेल ट्रांजैक्शंस टू इंडिविजुअल्स और कार्ड सेल ट्रांजैक्शंस टू इंडिविजुअल्स. अभी यहाँ पर कई बार कैसे होता है, जैसे व्हेन वी आर ट्रैवलिंग आउटसाइड इंडिया वी नीड टू बाय सम पर्टिकुलर करेंसी ऑफ दैट कंट्री. जैसे अगर मैं दुबई घूमने जा रही हूँ तो आई विल ईदर बाय सम दिरहम्स और देन आई विल हैव अ ट्रैवलर्स कार्ड which will be loaded, or I would say which would be added with some balance of that particular country's currency which I can go abroad and use it,
right? So in these cases also, it will be considered as if it is a remittance which is made, but and if it is for travel purposes, you will not get that 7 lakhs ka remittance, and TCS will be made in these circumstances as well, right? Now there are some cases, right, wherein you are traveling for business purpose and your employer might be booking your tour outside. So it is not typically a vacation or any other program, and your employer may be doing all the arrangements on your behalf. So in this case, if a currency card is given to the person who is an employee and the employer has filled it with the requisite currency and he is the person who's sending the employee outside, in that case the LRS doesn't apply, because LRS is applicable only to individuals. So if it's a corporate or some entity like that which is selling a currency card or or a card which is filled with some pre-fixed amount to business travelers, then in that case this 206C1G to my mind would not be applicable, because it is not a remittance outside India under the LRS scheme, because LRS is only in the context of individuals, and a corporate which is sending people out like this may not be covered under the TCS provisions. So these were few issues which had come up. Now I would just like to share one point here. This cascading effect point which is there, no TCS. This was not there originally when the section came in. So originally there was a scope that there would be TCS collected twice. So जैसे पहले हीना टूर्स ने कलेक्ट किया, फिर हीना टूर्स ने वो पैसा एडी को दिया, तो एडी ने भी वो पैसा कलेक्ट कर लिया. But then when they made the bill into act, they put in this fourth proviso, and that is how the double TCS is now taken care of. सो 206C1G जो है उसका इम्प्लीकेशन अगर हम देखें तो LRS के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा है, बिकॉज टूर ऑपरेटर्स अभी थैंकफुली और अनफॉर्चुनेटली आई विल से आफ्टर द सेक्शन गॉट एनैक्टेड फॉरेन ट्रैवल एज सच कम हो गया है, बट येस इट इज़ एन एडिशनल बर्डन फॉर पीपल हु आर थिंकिंग ऑफ ट्रैवलिंग अब्रॉड कि 5% एक्स्ट्रा आपको बजट करना है अभी, जो भी आपका ट्रैवल का बजट है ओवर एंड अबाउट दैट विच विल बी टेकन एज TCS. You can certainly take credit of this amount which has been collected, but at the outset it is an extra cash outflow which you have to think of. वो पहली चीज है. दूसरी, जहां पर LRS का बात है तो 7 lakhs relaxation is there, that is per PAN based and for one financial year. So if you really want to send out some money outside, then you can have that money remitted from two of the family members. That 7 lakhs criteria is exhausted on the PAN of the assessee remitting money outside India. So this was what I had to share on 206C1G. Now if there are any questions, we can have a look at that. Okay, whether just booking hotels and flights will trigger TCS at the rate of 5%. So if you're traveling abroad and if you're making hotel bookings and arrangements for your stay, and if you're doing it on your own, so I think the hotel booking part and all will trigger TCS, because it's a online overseas tour program package which includes the traveling element also and the cost of lodging and boarding abroad also. Yes, someone has raised their hand. I think you can unmute and speak. Yes. मैम एक ऐसा क्वेश्चन था, TCS जो है वो मैक्सिमम केसेस में हमारे पास इनवॉइस में लग के आ रहा है. हाँ. जैसे कुछ मान लो मोबाइल कंपनी के सप्लायर्स है, वो इनवॉइस में ही TCS लगा के भेज रहे हैं. हाँ. तो अब वो 1 जुलाई के बाद भी कंटिन्यू करेंगे शायद, तो क्योंकि वो लोग TCS रिसीट पे नहीं कलेक्ट कर रहे, इनवॉइस पे कलेक्ट कर रहे हैं. काफी लोग रिसीट पे नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, वो लोग जब भी इनवॉइस दे देते हैं तभी TCS लिख के दे देते हैं. अभी 1 जुलाई से अगर आपका बायर भी ये सेट ऑफ कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, जैसे उसका टर्नओवर भी प्रीसीडिंग ईयर में 10 करोड़ से ज्यादा है, तो he will be under the first obligation to deduct TDS.
तो उसे TDS करना है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट, विच एवर हैपेंस अर्लियर, विच इज बिफोर द सेलर कलेक्टिंग इट, राइट? बिकॉज आइडियली सेलर को रिसीट पे करना है TCS। मैम बट कैसा होता है, मान लीजिए अभी 1 करोड़ का इनवॉइस है, 18% का आइटम है, 18 लाख का GST है, 1 करोड़ 18 लाख का इनवॉइस रहेगा, उसके ऊपर वो लोग 0.1% 0.1%। TCS लगा के लगाएंगे। हाँ अभी हमको वो TCS के साथ वाली जो अमाउंट है हाँ, उसमें फिर से TDS डिडक्ट करना पड़ेगा। नहीं, उसे आपको उस केस में TCS यू विल हैव टू टेल द सेलर दैट नाउ इट इज नॉट कवर्ड बाय 206C1H, एंड अभी बायर अगर कंडीशन फुलफिल करता है तो वो TDS करेगा। यही वो चीज है कि जहां पर दोनों बायर एंड सेलर क्वालिफाई हो रहे हैं तो वहां पर अभी बायर विल बी अंडर ऑब्लिगेशन, टेक्निकली सेलर को नहीं करना चाहिए। अच्छा, ओके। एंड मैडम वन मोर थिंग, वो जो बिलेटेड रिटर्न जो TDS फॉर कैश विड्रॉल्स वाला था, हाँ उसमें वो 139(1) उन्होंने लिखा है कि 139(1) के पहले उनके तीनों रिटर्न्स फाइल होने चाहिए। हाँ बट टेक्निकली हम वेबसाइट पे जाके चेक कर रहे हैं ना, तो बिलेटेड हाँ, रिटर्न भी फाइल रहा ना तो वो 1 करोड़ का लिमिट बता रहा है, अच्छा और वो बोल रहा है कि 1 करोड़ के बाद आप 2% TDS डिडक्ट कीजिए। सो आई थिंक वो ऐसा है कि अगर हमने 31 जुलाई के बाद भी आपने रिटर्न फाइल नहीं किया प्रीसीडिंग का, तो हाँ, फिर वो जब तक रिटर्न फाइल नहीं करते तब तक 20 लाख वाला लिमिट रहेगा, और जैसे ही रिटर्न फाइल कर देते, 3 साल वो का रिटर्न रिवाइज फाइल कर हो देते जाता हैं। है, अच्छा, हाँ, देन फिर से उसको 1 करोड़ का लिमिट चालू हो जाएगा। ओके। बट टेक्निकली अगर हम सेक्शन के वर्डिंग्स देखें दोनों 206AB और 194N के, तो आई थिंक वो दोनों ने 139(1) को रेफरेंस दिया हुआ है, लेकिन फिर शायद पोर्टल में उन्होंने वो डिस्टिंक्शन नहीं रखा है। जैसे ही वो पैन के आगे रिटर्न अपलोड हो गया है, वो स्टेटस आता है, तो आई थिंक वो लिमिट एनहांस कर देते होंगे। हाँ, सो ऐसा हो जा रहा है मैडम कि मान लो अभी पिछले साल किसी ने जनवरी 10 जनवरी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है ना, सो फरवरी में बैंक वालों ने उनका TDS मान लो 40 लाख भी विड्रॉल किया होगा तो 5% TDS चालू कर दिया, करेक्ट। एंड 2% TDS, एंड जैसे उन्होंने मान लो फरवरी में रिटर्न फाइल कर दिया, 28 फरवरी को रिटर्न फाइल कर दिया, फिर ये लोग क्लाइंट लोग बैंक में जाके इन्फॉर्म करते दे रहे हमने रिटर्न फाइल कर दिया है, अभी हमारा लिमिट 1 करोड़ हो गया, तो बैंक स्टॉप कर दे रही है TDS डिडक्ट कर देना। सो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें इंडस्ट्री में कि TDS सॉरी इनकम टैक्स रिटर्न बिलेटेड वाला एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा। करेक्ट, क्योंकि लीगली हम अगर सेक्शन के वर्डिंग्स को देखते हुए जाए तो उधर 139(1) लिखा हुआ है, लेकिन जैसे आपने कहा कि रिटर्न फाइल करते हो वो स्टेटस चेंज कर देता है, तो शायद वहाँ पे डिफिकल्टी हो सकती है। अभी अगर आपके क्लाइंट्स बैंक्स हैं जिन्हें आप एडवाइस करना चाहते हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि टेक्निकली बिलेटेड रिटर्न वगैरह फाइल होने पे लिमिट 1 करोड़ नहीं होना है, बट स्टिल इट्स समथिंग व्हिच नीड्स टू बी पॉइंटेड आउट टू CBDT इन दैट केस। ओके ओके, यस। मनीष सर। हाँ अविनाश सर, गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग सर। मैडम मेरा एक क्वेरी ऐसा है कि 194Q में हाँ APMC में कमीशन एजेंट है और फार्मर के बिहाफ पे वो गुड्स सेल करता है। हाँ, तो अगर सपोज वो 50 लाख के ऊपर अगर गुड्स बेच देता है, इसको तो सिर्फ कमीशन मिलने वाला है, करेक्ट। और सामने वाले का टर्नओवर 10 करोड़ का है, तो व्हाट विल बी द पोजीशन रिगार्डिंग TDS ना 194Q। हाँ यस यस, इसके बुक्स में सिर्फ कमीशन ही रिकॉर्ड हो रहा है मैडम एज एन इनकम। करेक्ट, पर तो वो ये उससे पैसा कलेक्ट करता है और फार्मर को दे देता है। पर वो बायर के बिहाफ पे ये गुड्स सेल कर रहा है, राइट? एजेंट है। सेलर के बिहाफ पे, फार्मर इज द सेलर। फार्मर इज द सेलर, ओके। हाँ, सो ही इज सेलिंग द फार्म प्रोडक्ट्स ऑन या इन APMC मार्केट, सॉरी इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट, APMC जैसे। या तो हु इज द बायर ऑफ दीज प्रोडक्ट्स? वो ऑक्शन में जो ऑक्शन में ये करता है मैडम, प्राइस बीड करता है, जो हाईएस्ट प्राइस बीड करता है वो परचेस कर लेता है। ओके, सो वो सिंगल ट्रांजैक्शन 50 लाख के ऊपर हो सकता है क्या? मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे मैडम 50 लाख के ऊपर साल भर में मल्टीपल ट्रांजैक्शन। तो इस केस में अभी
जैसे अगर हम ये पॉइंट साइड में रखें कि अभी एजेंट वाज द पर्सन हु वाज सेलिंग इट, सो इन दिस केस नाउ द बायर विल बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टीडीएस। तो ये 50 लाख के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने वाला जो बायर है उसका टर्नओवर अगर 10 करोड़ क्रॉस कर रहा है अर्लियर ईयर्स में, हाँ हाँ तो हाँ उसे 194 क्यू के अंदर टीडीएस करना पड़ेगा। हाँ, वही बोलो। तो ये इसमें क्या है मैडम कि इनको कमीशन सिर्फ 2% मिलता है, हाँ, तो इन लोगों का तो पूरा पैसा उधर ही ब्लॉक हो जाएगा, टीडीएस और इसमें सब। नहीं पर टीडीएस ये सेल से इनकम जो हो रहा है वो हाँ। एजेंट का इनकम थोड़ी है, वो तो वो फार्मर का इनकम है ना जो इसके थ्रू सेल मैडम कर। इनको सिर्फ कमीशन मिलता है, जो गुड्स बेचते हैं ना ये लोग, तो इनको हाँ कमीशन मिलता है, कमीशन एजेंट को। टीडीएस यहाँ पर सेलर के एंगल से होगा ना, माने द पर्सन जिसका ये इनकम है उसका ये टीडीएस होगा, तो एजेंट तो यहाँ पर खाली कमीशन अर्न कर रहा है, तो ये टीडीएस जो है वो सेलर के कॉन्टेक्स्ट में डिडक्ट किया नहीं, जाएगा। इफ ये हम लोग है ना 194 क्यू का जो वर्डिंग देखते हैं ना मैडम, हाँ तो जी, उसमें बोला नहीं है उन्होंने कुछ भी ऐसा। नहीं ऐसे बोला है, एनी पर्सन हु इज अ बायर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेसिडेंट फॉर हाँ, परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू सो एंड सो सेलर बोला ही नहीं है मैडम यहाँ पे। टीडीएस एट द रेट ऑफ 0.1%। हाँ, सेलर बोला ही नहीं है मैडम, उन्होंने क्या बोला है कि बायर पेमेंट करेगा, ऐसा बोला है टू द रेसिडेंट। For any sum to any resident hereinafter in this section referred to as the seller। नहीं तो ये कमीशन एजेंट को नहीं आएगा क्या फिर ये? नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि टीडीएस तो वो पर्सन का होगा ना जिसकी ये इनकम है सामने। बरोबर है, इंडिविजुअल फार्मर्स का तो टर्नओवर कम रहता है मैडम, 50 लाख के नीचे रहता है। तो फिर वो कवर्ड ही नहीं है ना, मैंने वो बायर टीडीएस वो फार्मर के उसका एग्जेम्प्ट इनकम बता रहा है क्या ये? नहीं, इसमें कैसा रहता है मैडम कि बिल जो इशू करता है ना, हाँ, वो कमीशन एजेंट इशू करता है बिल। ओके। हाँ, एपीएमसी रूल्स के हिसाब से बिल्स जो इशू करते हैं वो कमीशन एजेंट इशू करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ ये फार्मर। पर फिर वो अपना कमीशन रख के बाकी का अमाउंट फार्मर को ट्रांसफर करता हाँ, होगा। ट्रांसफर कर देते हैं, यस। तो द सेल और द इनकम फ्रॉम दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन बिलोंग्स टू द फार्मर, राइट? सेल इज बिलोंगिंग टू द फार्मर। फार्मर, हाँ, तो he is the person who is selling the goods, so the agent is just a mechanism for the farmer to facilitate his sale। हाँ, So, क्योंकि हम लोग बायर के केस में आते हैं ना मैडम, सर नहीं अगर हम लोग आपका बायर के केस, क्या बोल रहे हैं, सॉरी? हम लोग बायर के केस में आते हैं ना अगर, हाँ, उसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेसिंग फ्रॉम दैट कमीशन एजेंट ही दिखेगा, उसका लेजर कमीशन एजेंट का ही लेजर दिखेगा। नहीं उसके बुक्स में किस तरह से आप एंट्री कर रहे हैं दैट कैन नॉट डिटरमाइन माय टीडीएस नो। मेरा जिस पर्सन का इनकम है उसका टैक्स एट सोर्स डिडक्ट करना चाहिए मुझे, तो ये सेलर अपने बुक्स में ये सेल दिखा रहा है क्या? नहीं, ये जो आपका एजेंट है, इनकम बुक करेगा फिर, ये जो एजेंट है वो सेल प्रोसीड्स उसके बुक में तो नहीं दिखाता होगा ना, नहीं बताएगा, सिर्फ वो सेल तो प्रोसीड इशू करेगा नेट और ऑफ फार्मर। कमीशन करके पास ऑन करता होगा हाँ उसको। हाँ हाँ हाँ, उसका टीडीएस नहीं होगा इस केस में। ओके ओके। और एक और क्वेश्चन था मैडम, हाँ जी, 194A में और 194C में लास्ट ईयर में अप्रैल 2020 में वो अमेंडमेंट हुआ था इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। पहले कैसा था कि 44AB के हिसाब से क्लॉज ए और क्लॉज बी में जो टर्नओवर लिमिट स्पेसिफाई किया हुआ है, अभी उन लोगों ने वो 44AB क्लॉज ए एंड बी निकाल दिया और अभी उन्होंने स्पेसिफिकली बोल दिया 1 करोड़ और 50 लाख, विच एवर इफ इट इज एक्सीडिंग 1 करोड़ और 50 लाख। तो अभी जो लोग 44AD में रिटर्न फाइल कर रहे हैं और उसका 1 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है, हाँ, तो उन सबको भी टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा ना? हाँ जी, ये पहले भी ऐसे ही हम कर रहे थे बट अभी उन्होंने वो स्पेसिफिक अमाउंट्स डाल के उसको हाँ क्लियर। हाँ हाँ, हाँ, ओके ओके। आई हैव वन मोर क्वेश्चन यस मैडम। वो अमेंडमेंट्स पे नहीं है लेकिन 194C और H में थोड़ा डिबेटेबल इशू है। आपके वहाँ भी ये मुंबई में भी जरूर रेज हुआ होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के डीलर्स है मैडम, वो लोग बजाज फाइनेंस पे अपना गुड्स बेचते हैं। बजाज फाइनेंस का वो लोग सर्विस लेते हैं। बजाज फाइनेंस उनको पेमेंट काट के, मान लीजिए अभी मेरा 1 लाख का टीवी है, मैंने कस्टमर को बेचा,
1 लाख रुपए का कस्टमर बिल लेके बजाज फाइनेंस जाता है, मेरा बजाज फाइनेंस के पास कोड है, वो लोग मेरा बिल देख के, मेरा क्रेडिट वर्दीनेस देख के कि मेरे कस्टमर्स ने पेमेंट किया है, वो क्रेडिट पे बजाज फाइनेंस सेल अलाउ कर देता है, और मुझे 99,600 99,400 उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस बोलो या कमीशन बोलो, वो लोग काट के मुझे बाकी का पेमेंट मेरे अकाउंट में डाल देते हैं। और वो ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स का क्यूमुलेट करके एवरी मंथ एंड पे एक इनवॉइस देते हैं, टोटल जितना भी रहता है उसको वो लोग सबवेंशन इनकम नाम से एक इनवॉइस देते हैं, वो हमारे 2A पे भी दिखता है मैडम। अभी सवाल ये है कि मान लो वो पूरे महीने में अमाउंट हो जाती है 12,000 या 13,000 या मान लीजिए 20,000। अब उस पे ये हमारा एक्सपेंडिचर है मैडम, ये हमारा एक प्रकार का हमको कंसिडरेशन कम मिला है, वी कैन से दिस एज अ कमीशन और वी कैन से दिस एज अ डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस। तो सवाल ये मैडम उस पे TDS हमने 194C में काटना या 194H में या कोई और सेक्शन में? if we are consider it as a commission तो वो 15,000 का ट्रिगर लग जाएगा, if we are consider it as a 194C तो उसको 1 लाख का लिमिट लग जाएगा, थ्रेशोल्ड लग जाएगा, एंड रेट में भी डिफरेंस हो जाएगा। 194C तो मुझे नहीं लगता है ना, मतलब आपने जिस तरह से डिस्क्राइब किया वो ऐसा प्राइमा फेसी सुन के 194C इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क परफॉर्म ना। मैम क्या है, मैंने कुछ अपने इनके साथ भी डिस्कस किया जो कलीग्स है, वो उनका क्या बोलना है, दिस इज चार्जेस नॉट रिलेटेड टू योर सेल्स प्रमोशन और कमीशन टाइप ऑफ, इट इज रिलेटेड टू योर डॉक्यूमेंटेशन। अभी नाम वो सबवेंशन इनकम देते हैं, अभी नाम से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है। और डीलर और बजाज फाइनेंस का मैडम कॉन्ट्रैक्ट होता है, उनका डीलरशिप का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमारे पास जो आपके कस्टमर्स आएंगे उनसे हम XYZ चार्जेस लेवी करके माइनस करके आपको रिम्बर्समेंट करेंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कुछ लोग उसको डॉक्यूमेंटेशन के चार्जेस बोलते हैं, कुछ लोग उनको कमीशन बोलते हैं। सो थोड़ा एक कॉन्क्रीट आंसर चाहिए कि वो क्या है, थोड़ा अगर आप रिसर्च करके बताएंगे तो चलेगा। ये 194C में काटना है कि 194H में काटना है, क्योंकि 1-2% और 5% में बड़ा फर्क हो जाता है। सर्टनली, और आप जब TDS डिडक्ट करने के इसमें है तो बहुत ज्यादा इम्प्लीकेशन हो सकता है इसका। ठीक है, मैं इस पे देखूंगी, लेकिन प्राइमा फेसी जो वर्क का डेफिनेशन है जो 194C में हम यूजुअली देखते हैं, उसको अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप जो ट्रांजैक्शन डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, वो मेरे हिसाब से 194C में नहीं आ सकता है। भले आप उसको डॉक्यूमेंटेशन चार्ज या ऐसा कुछ नाम भी दे, बट इट इज समवेयर लाइक, और आई वुड से मोर क्लोजर टू कमीशन। But if I find anything to contrary, I'll get back to you. इसमें मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने कोई सर्कुलर वगैरह CBDT ने इशू नहीं किया है, क्लैरिफिकेशन की जरूरत है मुझे लगता है वहाँ। हो सकता है यहाँ पर वो सिम कार्ड सेल और ऐसे सब जो दूसरे केस लॉज है ना, उसमें से शायद हमें कुछ इन्फर करना पड़ेगा। डायरेक्टली तो सेम टू सेम फैक्ट्स मिलना मुश्किल है, बट देन व्हाट यू आर डिस्क्राइबिंग साउंड्स लाइक समथिंग व्हिच इज related to commission. Okay. Yeah. Ma'am, some questions are there in Yeah, chat box. I'll check Pawan, the chat box. I'll check the chat box first. So there is a पहले question. उसमें पवन अग्रवाल सर का है, what if ITR is filed after due date? हाँ, आई थिंक ये वो 139 जब हम 194 डिस्कस कर रहे थे तभी पूछा है इन्होंने। तो यूजुअली 139(1) का ड्यू डेट हमें देखना है। सो इफ यू हैव नॉट कंप्लाइड विद द 139(1) ड्यू डेट, यू वुड स्टिल बी ट्रीटेड एज अ नॉन फाइलर। लेकिन जैसे अभी संतोष सर बता रहे थे कि वो पोर्टल में अगर आप बिलेटेड रिटर्न भी फाइल कर देते हैं तो थ्रेशोल्ड चेंज हो रहा है। सो दैट इज समथिंग व्हिच नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड प्रैक्टिकली। Right. एक और क्वेश्चन है, whether just booking hotels and flight will trigger TCS at the rate 5%? मैंने आंसर कर दिया actually. So if you are traveling, if you are going abroad and you are booking outside India accommodation and a flight, it will trigger TCS. Subodh sir का एक क्वेश्चन है, in case of student education purposes, whose PAN is to be quoted, parents or student?
Now, usually, see, in case of loan which is availed for your child's education abroad, the loan is usually taken in the name of either of the parents, क्योंकि वो loan eligibility criteria में student fit नहीं होता है unless he is also earning and he fits the eligibility criteria. So LRS quota वहाँ पर जो remittance का है, that would be of the person who is borrowing the amount, which in my case would be, I mean, which in usual case would be either of the parents. और एक question है Whether buyer is required to deduct TDS under 194Q on post sales discount or cash discount given by the seller. So this is something like a upfront payment made or something like that, which he is trying to ask. Now the amount on which, under, if we look at 194Q, right, what it says is he shall at the time of credit to the account of the seller or at the time of payment by any mode, whichever is earlier, deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding 50 lakh rupees. So I think whatever he is ultimately paying, if that is in excess of 50 lakhs, because here unlike 206C1H receipt pe nahi hai. This is, you know, when you are paying or when you are crediting in your books. So to my mind, post sale discount pe TDS will have to be made to the amount you are ultimately paying or crediting in your books, is what I would like to answer at this point in time. Yeah, PPT will be shared with all of you. I've given it Madam, to. Yes. I have one question regarding 194N. Madam, cash withdrawal by credit cooperative societies, what we call Path Samstha from a bank, whether it will attract 194N for Path Samstha? So here the credit cooperative society is the account holder, no? Yeah, madam. Okay. So in this case, you know, I will tell you that they have given some kind of transactions which are excluded from this 194N. That said, that one of the point which it says is any payment which is made to any banking company or cooperative society engaged in carrying on the banking business. So now see, in this case, whatever usually is the account holder is withdrawing, that is liable for this 194N, but they are using the terms that when the payment is made to a cooperative society which is engaged in banking business, this provision shall not apply. So if this cooperative credit society is a is an account holder and the payment is made by the bank to this entity, then it is covered under the third proviso to that section. Okay, when the bank did not deduct from the payment of that is so when the payment is made to government or other bank or an ATM, so those kind of things have been excluded from 194N. There is a notification again, which is Madam, one more. GB Modi here. Hello. Yeah, CHGB Modi here. Yes, sir. See, what they have told, a cooperative institution which is doing banking business, it means that institution should have a banking license from RBI. If cooperative societies are registered by district cooperative registrars. So in my view, those societies which are withdrawing cash from their bank are not exempted. Sir, there is also a notification here, which unfortunately I don't have handy right now, which we need to check before we conclude on this, because APMC related payments and all that is also covered in this notification. So whether they have included these kind of credit societies, we need to check, sir. I'm 100% sure, because normally cotton ginners, they need heavy cash. Okay.
they are trying to use this route, but ultimately this is not possible for them because cooperative societies are not registered as a banking institution under Reserve Bank of India, or they have not been given banking license from RBI. So that is my view. But it has been tested and it has been found that bankers are deducting TDS, even the cooperative societies withdrawing cash from their own current account. Okay. What still keeps me in doubt is the fact that there are two different points in the proviso. First one says any banking company or cooperative society engaged in carrying on the business of banking or a post office, and then there is a business correspondent of a banking company or a cooperative society. So first point ke liye they have not said this, but I would like to check this up and also the notification. मनोज सर, आप कुछ पूछ रहे थे? मनोज डिसा सर। सर वो मोदी सर ने पूछ लिया ना। Okay. 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 Yeah. Any other questions? More questions? Madam, Yes, sir. 194Q is applicable from 1st of July. बराबर है? Yes, sir. अगर ऐसा समझो कि स्टेटस को अगर वैसा ही रहेगा और बायर अगर टीडीएस डिडक्ट नहीं करता है सेलर से 50 लाख के ऊपर होने के बाद, जिसका 10 करोड़ के ऊपर ट्रांजैक्शन है, करेक्ट, ऐसे केस में उसका टीडीएस जो अमाउंट पे कटा नहीं है उतना डिसअलाउंस अपने को बताना पड़ेगा क्या? उतना उसका जो परचेस उतना डिसअलाउ होगा? 30% परचेज उतना अमाउंट उसका डिसअलाउ हो जाएगा सर 40A में। 40A में वही वो तो अगले साल आएगा अनलेस एंड अनटिल अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट आता है तो। हाँ, मतलब वो अभी भी वी डोंट शायद सेक्शन। और अगर सामने वाले सेलर ने 206 में उसका काट लिया है आइदर और एक ही जगह होना चाहिए तो फिर भी उसको डिसअलाउंस आएगा? हाँ जी सर, क्योंकि जो प्रोवाइजो है 40A में, जैसे वो रिटर्न फाइल किया है और सामने वाले ने इनकम कंसिडर किया है, वैसा कोई रिलैक्सेशन उनको एक्सप्रेसली देना चाहिए था ना 40A में कि अगर 194Q में TDS नहीं किया है पर सेलर ने 206C1H में TCS कर लिया है तो बायर को डिसअलाउंस नहीं होगा, ऐसे उन्हें एक्सप्रेसली बोलना चाहिए था। जब तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं आता है तब तक बायर को डिसअलाउंस हो जाएगा सर। Okay, ma'am. Thank you. Something is there in the chat box. Any other questions? Hello. Yes, sir. Yes. हाँ नारायण जी बोलिए। No question. थैंक यू मेंबर्स। और अगर कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेरी पूछना है आखिरी की। यस पूछिए ना, पूछिए नारायण सर। हाँ पूछिए सर जी। हाँ, ये एमएससीपी पे TCS कलेक्ट होके आ रहा है 50 लाख के ऊपर के लाइट बिल पे। इसमें सर आपका इनिशियल पार्ट मुझे सुनाई नहीं दिया। हेलो। हाँ सर, आपका वॉइस ब्रेक हुआ बीच में, सिर्फ फिर से रिपीट कीजिए ना क्वेश्चन। एमएससीपी लाइट बिल है ना, हाँ, उसके 50 लाख से ज्यादा रिया तो उस पे TCS कलेक्ट हो रहा है। हेलो हेलो। यस सर। तो जब 50 लाख से ऊपर लाइट बिल आएगा तो उसका भी TDS काटना रहेगा क्या एमएससीपी का? अभी गुड्स के डेफिनेशन मैडम मार्च के हमारे TCS तो लग रहा है लाइट बिल। हेलो। Yes, sir. I think the question which he wants to ask is whether sale of electricity bill पे अगर TCS collect हो रहा है तो TDS आएगा कि नहीं, but usually electricity जो
इलेक्ट्रिसिटी जो सेल कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में आई, माने अगर आप पावर जनरेशन में है एंड यू आर सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इफ फॉर वन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इट इज क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ 50 lakhs, तो आई थिंक TDS 194Q में आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज बीन कंसिडर्ड एज गुड्स एंड उस पर TCS तो कलेक्ट हो रहा था अर्लियर प्रोविजंस के हिसाब से, लेकिन अभी इसमें MSCB तो TCS कलेक्ट। हेलो सर, आपकी वॉइस है ना ब्रेक हो रही है सर। सर आप आवाज आ रही टाइप कर सकते हैं क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन सर टाइप कीजिए ना, अगर आप टाइप कर सकते हैं तो। मैडम लेकिन क्वेश्चन शायद वही है, यानी कि वो TCS तो कलेक्ट, हाँ इलेक्ट्रिसिटी कंपनी TCS कलेक्ट कर ही रही थी, तो अभी जैसे TDS कंडीशन अप्लीकेबल हो गई है तो क्या हमने TDS भी काटना चाहिए उनका? हाँ, सो जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो सेलर के पर्सपेक्टिव से TCS कलेक्ट कर रहे थे अभी फॉर अ पर्टिकुलर मंथ या फॉर अ पर्टिकुलर आफ्टर इन अ ईयर आफ्टर पर्टिकुलर मंथ्स, अगर मेरा एग्रीगेट 50 lakhs क्रॉस हो जाता है तो देन आई वुड ऑल्सो बी अंडर एन ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट TDS ऑन इट, क्योंकि गुड्स का डेफिनेशन बोला नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडेड है गुड्स के डेफिनेशन में, तो जिस तरह से सेलर TCS ले रहे थे, अभी अगर मैं क्राइटेरिया फुलफिल करती हूँ और 50 लाख के ऊपर अगर मेरा ट्रांजैक्शन है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल विच आई एम पेइंग, तो आई वुड बी कवर्ड अंडर 194Q। अभी तक कोई एक्सक्लूजन नहीं आया है इसके कॉन्टेक्स्ट में। MSCB ने वो एक्सेप्ट करना चाहिए मैडम। एक्सेप्ट करना चाहिए सर, अभी we don't know, we can expect some exclusions in this regard, because if we pay lesser amount than the bill, they don't accept our bill ना मैडम। करेक्ट, एंड इट इज नॉट फोर्सिएबल कि आप किसी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी या किसी बैंक या ऐसे किसी एंटिटी का TDS डिडक्ट करो, दैट इज नॉट हाउ वी यूजुअली अंडरस्टैंड द प्रोविजंस टू बी, बट एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग टू एक्सक्लूड नॉट डिडक्टिंग TDS फॉर दिस। शायद उन्हें एक्सक्लूड कर दे, बिकॉज लॉजिकली सही नहीं लगता है एज अ बायर टू पे लेस टू द MSCB और BSES or whatever other entity it is. अच्छा question है, so one should make a note of it actually. As of now there is no exclusion sir, unfortunately. So अभी जैसे अभी provisions है वैसे ही रहे तो शायद buyer would have to deduct TDS. Yes, any other question? Any other questions? Okay. Yeah. Thank you मैम, Thank you. थैंक यू आपने ये पूरे क्वेश्चन आंसर का सेशन लेने के लिए। और एक तो सिर्फ सभी पार्टिसिपेंट से एक बोलना चाहूंगा कि लॉकडाउन सीरीज में हमारा अगला सेशन जो है वो सैटरडे को है, लेकिन टाइम चेंज है इसमें, तो जो नेक्स्ट सेशन रहेगा वो मॉर्निंग 11 to 1 है रिगार्डिंग 12A and 80G। उसका मैं मैसेज भी अभी आज ही शाम को फॉरवर्ड कर दूंगा ग्रुप पे, तो सिर्फ एक ध्यान में रखिए कि जो टाइमिंग है वो थोड़ा चेंज है, 11 to 1 है सैटरडे रादर देन 4 to 6, और जो नेक्स्ट सेशन रहेगा फिर मैं आपको नेक्स्ट सैटरडे के सेशन में आपको बताऊंगा। संतोष सर, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वोट ऑफ थैंक्स शेयर कीजिए। थैंक यू अविनाश सर। प्राची मैडम, TDS और TCS ऐसा पार्ट है इनकम टैक्स का जो हमने CA फाइनल में भी ठीक से सीखा नहीं था और आज भी हम सीख ही रहे हैं, और हर अपडेट के साथ वो पुराना नॉलेज हमको साइड में रखना पड़ रहा है और नया नॉलेज लेना पड़ रहा है। और शायद अगर हम TDS और TCS पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखा तो 3 घंटे कम ही पड़ेंगे मैडम, ऐसा मुझे लगता है। फिर भी आपने जो रिसेंट अमेंडमेंट्स लिए हैं उसमें हम बहुत सारा क्लियर हो गया। वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो उसके ऊपर बहुत सारा कंफ्यूजन था, मुझे भी बाकी हमारे कलीग्स को भी, लेकिन आपने जो हिसाब से एक एक पॉइंट लिया, एक एक इशू कवर किया, सो हमारे बहुत अच्छे से वो ध्यान में आ गया है। फिर भी कुछ पॉइंट्स अभी डिपार्टमेंट से हम क्लेरिफिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ जाएंगे शॉर्टली बिफोर 1 जुलाई।
बट आपने बहुत अच्छे से सारे पॉइंट्स कवर किए, सारे इश्यूज जो हमको आ सकते हैं वो भी पॉइंट्स कवर किए। सो मैं धुले ब्रांच ऑफ WRC ऑफ ICI और नंदुरबार CP चैप्टर की तरफ से सभी मेंबर्स की तरफ से आपको धन्यवाद करता हूँ। आपने समय निकाला और हम सब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ आपने नॉलेज शेयर किया। अविनाश सर का भी मैं थैंक यू करता हूँ। सर आप बहुत इनिशिएटिव्स ले रहे हैं धुले ब्रांच के मेंबर्स के लिए भी, नंदुरबार CP चैप्टर्स के लिए भी। राजेंद्र मुंद्रा सर का भी मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, उन्होंने टेक्निकल सपोर्ट दिया हमको और अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह में भी उन्होंने काफी सपोर्ट किया। विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक ऑल अदर मेंबर्स ऑल्सो जिन्होंने कोऑपरेटिवली पूरे सेशन में अटेंडेंस दिया और एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। विद दिस आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अविनाश सर कि अगर आपका परमिशन हो तो हम सेशन को एंड कर सकते हैं। Thank you Okay, so thank much. you all members. Thank you, ma'am. Thank you, madam. Madam, Thank you all. Nice session. Thank you. Thank you. ma'am, shall I close?